बट ठीक है, जैसा भी है। नहीं बढ़िया लगता है सर आपका, है ना। आपका आ जाना ही अपने आप में बढ़िया है ना। नहीं, आई एम लकी सर। अरे सर आज पूरा कंप्लायंसेस एमसीए का देखेंगे, 2 हाँ घंटे जी यशश्री के साथ रहेंगे। I think we have started. नमस्कार फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत है। फ्रेंड्स, वी हैव आवर गेस्ट स्पीकर यशश्री दीक्षित जी फ्रॉम अहमदाबाद। On behalf of EDSC, we welcome you, ma'am. Welcome to the webinar. We have our founder convener Shri Dr. Durgadas Agarwal जी, आपका भी स्वागत है सर। फ्रेंड्स, जैसा आप लोगों ने अभी तक कंप्लायंसेस में बिजी थे, we were doing auditing, tax audit, ITR and all. So now it's time for ROC compliances, और आप लोगों ने, कई लोगों ने कर भी लिया होगा, कई लोग कर रहे होंगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए we have planned a webinar की भी आपकी ROC की जो annual compliances होती है, अपार्ट फ्रॉम दैट की अदर रेलेवेंट कंप्लायंसेस क्या है, आपको क्या करनी चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो वी हैव इनवाइटेड यशश्री जी। यशश्री जी, टू टेल अबाउट यशश्री जी, शी इज अ CS, practicing CS. Apart from that, she has done her doctorate in corporate governance, और साथ ही साथ वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं। गायशोल एलॉय लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी हैं आप। A regular speaker not only in colleges or business school, but आपके इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी हैं रेगुलर स्पीकर, और बहुत सारे आर्टिकल कंट्रीब्यूट कर चुकी हैं नेशनली और इंटरनेशनली, और काफी बढ़िया रहा इनका। यशश्री जी ने पहले भी हमारे बीच एक बार आ चुकी हैं, give a very detailed presentation about compliances. तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए हमने यशश्री जी को फिर से इनवाइट किया, और वी आर वेरी थैंकफुल टू यशश्री जी कि उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट भी किया, टाइमली एक्सेप्ट किया। बिफोर मूविंग फर्दर, आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर फाउंडर कन्वीनर डॉक्टर श्री दुर्गादास अग्रवाल जी। सर, आपसे रिक्वेस्ट है सर, प्रोग्राम की विधिवत शुरुआत करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू संदीप जी, द कन्वीनर ऑफ आवर स्टडी सर्किल। जैसा दोस्तों, अभी हमारा पहला सेमिनार 16 को सैटरडे को रहा, आज सेकंड है उसी कड़ी में, और जैसा संदीप जी ने प्रीएम्बल बताया कि एमसीए की कंप्लायंसेस, उसमें रिलीवेंट चेंजेस, तो सोचा कि ये हम एक डिस्कशन रख लें इस चीज पे। तो आज उसके लिए हमारे बीच में CS यशश्री दीक्षित है। इन्होंने रिसेंटली अभी अपनी थीसिस कंप्लीट की है, डॉक्टरेट का तमगा जल्दी से मिलने वाला है। तो वी आर वेरी लकी एंड कांग्रेचुलेशन यशश्री जी, आपको बहुत बहुत बधाई आपको। आप ऐसे ही प्रोफेशन में एक्सपर्टाइज करते रहें तो हमको यही खुशी होगी, और हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, उनके लिए आपका और भी एक्सपर्टाइज आज नॉलेज आप शेयर कर पाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारे पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करते हुए, और आज का जैसे संदीप जी ने बताया कि भाई अभी भी बहुत सारे कुछ तो जैसे इशू चल रहे थे कि भाई 31 दिसंबर के बाद शायद बढ़ा दें कुछ डेट्स वगैरह, फास्ट एग्जिट स्कीम की जो था, उसके लिए कुछ क्लैरिफिकेशन भी आया है कि भाई अगर कुछ केस टू केस बेसिस पे वो कर देंगे, लेकिन डेट नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी जो नॉर्मल है, हमारे जो AGM हो चुकी है सभी की, मैं समझता हूँ 31 दिसंबर लास्ट डेट थी, तो जो भी अभी कंप्लायंसेस रह गई हैं तो उसको हम टाइम से अपना कर लें पूरा। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए यशश्री जी को बुलाया कि आज MCA पर ही जो उसकी कंप्लायंसेस हैं उसके लिए वो सारा डेलिब्रेट करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को, यशश्री जी का और अपने संदीप शर्मा जी का स्वागत करते हुए सबको नमस्कार, जय श्री कृष्ण, वेलकम। ओवर टू संदीप जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। फ्रेंड्स, अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं और हम बस यशश्री जी को इनवाइट करते हैं टू स्टार्ट आवर डेलिब्रेशन। तो यशश्री जी, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू स्टार्ट योर डेलिब्रेशन। ओवर टू यू जी। Thank you so much, Durgadas sir and Sandeep sir, for given next time or again opportunity to take this session on annual compliance of the companies and LLP. Is it visible now, sir? Yeah, perfect.
Very good afternoon to all and welcome you all for session on annual compliance for companies as well as LLPs. The Companies Act 2013, which they have so many radical changes day by day that we have seen. And if you do not compliance or if you non-compliance of any provisions under the Companies Act 2013, then there will be the higher chances that you have to be bear the higher penalties under the particular sections. So the stricter regime even for unlisted companies as well as the private companies, there is a clear shift towards which is closing the monitoring unlisted public companies and uh, large private companies with enhanced compliance requirements encompassing disclosures, transparency, and governance and procedures. And we have seen day by day there is so many changes under the Companies Act 2030s, and the day by day the burden of compliance which is increase and increase. There is no such way that is reduced in the any compliances. In case of the private company, listed company, unlisted companies, or the LLP, all the compliances are the day by day increase. So we have to take care of the proper time. We have to take care that we should comply each and every regulations which is mentioned in the safety LODR regulations or the Companies Act 2030, and other radical provisions are there. Now let's start annual compliance of the private company. So as per the latest amendments, companies requirement for the companies have been changed in the comparison to compliance requirement as on the 1st April 2014 when the Companies Act 2013 which came into the effect. And after the commencement of the Companies Act 2013 from the 1st April 2014, there are various compliance requirements of the companies has been increases. So if we compare with the Companies Act 1956 and the Companies Act 2013, there is so many changes, and the compliance which is day by day, which is against increase. But after the 5th June 2015 and the 13th July 2017, there are certain exemptions which has been provided for the private limited company. And after all that exemptions, the statute of private limited company under the Companies Act 2013, which is more or less which is equal to the status as the Companies Act 1956. Now again the question arises, the basic question, that is the meaning of private company. So the private company means a company which is by its article restrict the right to transfer of shares. As you all are know that the private company can have a restriction that the transfer of its shares, that members as limited up to 200, and they cannot issue shares to the public. So that is a prohibits any invitation to issue such shares and securities of the companies. Again, the private company can be start with the 0 rupees authorized share capital. So there is again changes in the Companies Act 2013. So the private company can be incorporated with any amount of capital. So you can be incorporated private company with rupees 1, rupees 10, or infinite, or it may be form of rupees 2 or is infinite. And the joint order shall be counted as a 1. So in the private company, the joint order shall be counted as a 1. So if the two members which will be the purchase the shares in the one number, so it will be treated as a joint holders. And employees holding shares and the person which is formerly in employment, so who were the members during such employment and still they continue to be the member, shall not be counted in the limit of the 200. So the any employee who purchases shares of the company shall not be treated as a member of the company and shall not be counted in this limit of 200. Next one, that is importance features of the private limited company. As I said earlier, there is no need of minimum capital requirement. So if you want to start any private company, so you can start with the rupees 2 or infinite. So there is no such requirement of minimum capital. Next one, that is have been allowed to accept the deposit from the members without the requirement of the offered circular creation of deposit DRR, deposit repayment reserves, maximum of 200 of the aggregate of its paid up share capital and the free reserve. It does not include the securities premium. So they can accept the deposit from the members. In case of the private company, if they are passing resolutions under section 179 subsection 3, resolutions such as appointment of secretarial auditor, appointment of internal auditor, at that time they do not have to file the board resolutions. They do not want to file MGT 14 with the ROCs. In case of the approval of the financial statement, they do not want to
required to file the board resolutions. They do not want to file MDT 14 with the ROCs. So again, this is exemption given only for the private company, not for the public companies. Loan to directors under section 185 is allowed to subject to certain conditions, and 188, even if the members which is related, they can also, he can vote on such resolution which is required to pass 188. So 188, it's basically related party transactions disclosure, and again related party transaction is also applicable to the private companies, but they have to fulfill the conditions, whether the whatever the transaction, such as office in place of profits, or the sell or the supplies, or in case of the lending or rendering any services, or in case of any rent, then at that time they have to check the conditions, whether the both the transactions as an arm's length price or not. If the arm's length price, then again we have to check the ordinary course of business or not, this particular transaction or not. So all these compliance are very important whenever you are prepare director's report of any particular company. This is the annual compliance of a private companies. I have divided this compliance for the basically of the each quarterly. So I have divided each compliance for particular 4 quarters. So the first quarter, which is started from the April to June. So the first quarter, beginning of the first quarter, on the very first day of financial year, we have to check 2 compliances. The compliances which is MBP 1 and DIR 8. MBP 1, which is again under section 184 subsection 1 of the Companies Act 2013. So the every directors of the company in the first meeting of the board of director in each financial year shall disclose his interest in the other entities. So we should take each and every directors, if the directors is a independent directors, either executive directors or the non-executive director, we should check MBP 1. This is again voluntary disclosure, that this disclosure is not required to file with the ROC. So ये जो disclosure है MBP 1 वो हमें सारे directors के पास लेना है. This disclosure is basically if there is any change in the directorship of the company, is there any change in the shareholding pattern of the company. So that's why this voluntary disclosure which required from each and every director of the company. So the every director is required to submit with the company fresh MBP 1 whenever there is a change in his interest from the earlier given MBP 1. So again, one question arises, if there is a no change in the disclosure of interest in other entities, at that time should we require MBP 1 from each and every individual director? And my answer is yes, we should require this disclosure each and every financial year from each and every directors of the company. Again, this is voluntary disclosure and MBP 1 is not required to file with the ROC. As I said, ये जो particular disclosure है that we should not file with the ROC. ये ROC के साथ हमें कोई भी particular form नहीं है कि जो आपको file करना है. This is again small disclosure है जो हमें director के पास से collect करना है, उनकी information और उनकी signature करवाना है. Next one, that is the receipt of DIR 8 under section 164 of the 164 subsection 2 of the Companies Act 2013 and 143 subsection 3 subsection G of the Companies Act 2013. Again, it's a voluntary disclosure and it's not required to file with the ROC. This particular disclosure is basically from each and every director of the company in each and every financial year will submit with the company disclosure of non disqualification कि हमारी कंपनी के जितने भी directors हैं वो disqualified नहीं है under the Companies Act 2013. So we should take care of this thing. ये हमें again each and every directors, again it's a non-executive director, executive director, independent directors, any kind of director in our company. So we should disclose that the again our director is not disqualified under the Companies Act 2013. So in each financial year, this is again the first disclosure that we have to taken from the directors. Next one, that is the MSME 1, which is under section 405 of the Companies Act 2013.
half-yearly return, which is basically the MSME one, under Section 405 of the Companies Act 2013, which is delay in the payment to the MSME vendors. The company which is have to the file this return half yearly in respect of the pending payments to the MSME vendors as at the end of the each and every financial year. As over the financial year which is closed on the 31st of March, so we have to file this compliance between the half yearly period of the October to 31st March. So the 1st October to the 31st March. And the due date of filing this form is basically the 30th March. After that, the 1st April to 30th September, the due date of filing this particular form is 30th October. MSME form, that is outstanding payment of the small and medium enterprise, So we should file this form MSME 1. Again, it is compulsory disclosure. If we supply any goods and services, or you can say any payment which is outstanding towards a micro and small enterprise, at that time we should compulsory file MSME 1 on or before the 30th April or on or before the 30th October. Next one point, that is DPT3. This form is again important, and this is again the not voluntary, this is again statutory disclosure, that we should file this form under Section 73 Rule 16 of the Companies Act 2013. Return of deposit, that is company is required to file this form each and every year on or before 30th June. It is a compulsory that we should file this form on or before the 30th June from the particular period. We started from the 1st April to the 31st March. जितने भी कंपनी की डिपॉजिट्स है, if we accept these deposits from deposits which are this deposit which is not covered under the transaction, that we should mention under the form DPT3. और ये जो particular transactions, as I said, that is from the 1st April to 31st March, and all those transactions which is not covered under this deposit, that we should file under the form DPT3. Again, it is a compulsory disclosure that we should compulsorily file on or before the 30th June. Next one, that is the quarter 2, that is July to September. First quarter, which is started from the April to June. In this quarter, the only 4 compliances are there. The 2 compliances which is against a voluntary disclosure, and the second one that is against a compulsory form. That is MBP1 and DIR8. This particular 2 forms which is not required to file with the ROC. Again, the 2 another form, that is MBP, DIR DPT3, and the second one form, that is the MSME 1, which is again compulsorily filed with the ROC. Next one, that is a quarter 2, July to September. This quarter is very important because in this particular quarter, which conduct our annual general meetings, we have to prepare our director's report, auditor's reports, notice, approval of the notice, agenda. All these particular transactions are come under this particular quarter. So number first transaction, that is 134. In this particular section 134 of the Companies Act 2013, approval of financial statement, preparation and approval of financial statement. The auditor's report shall be attached to the every financial statement. So auditor's report, it's a part of the financial statement under section 134 of the Companies Act 2013. Second one, that is section 134 of the Companies Act 2013, that is the director's report. Director's report, it's again important point. And director report shall be prepared by maintaining all the information which is required a company under section 134, which is read with the relevant rules and the relevant provisions under the Companies Act 2013. So if we read section 134 in each and every provision, say in this provision that they have said that our director's report, we should mention about the directors of the company, board meeting of the company, in case of EGM which is held in between the financial year of the company. So we should mention the board of directors meeting, we should mention the EGM of the company. So all these things, again, it's a compulsory part. Second one thing, that is the number of meetings by the board, directors responsibilities statement. Third one, that is the details in respect of the fraud. Agar koi bhi fraud suspect hua hai auditor se, so at that time we have to mention this fraud under the director report of the company. CSR, if the CSR is applicable to the company, then we have to mention that the particular CSR applicable provision which is again applicable to the company. Next one, that is any explanation given by the directors towards the auditors reports, we have to mention. Any
loans, guarantees, or investment towards the company. So we have to the mention in this point. Second one, board of directors meeting. At that time, we have to check between the two board meetings. That is a no, not more than gap between the 120 days. So we have to the check at least 4 meetings in each and every financial year. Next one, that is the state of company's affairs. In case of any changes in the business transaction, in case of the any changes in the business of the company, so we have to mention in this director's report. Second one, that is in amount, if any, proposed to carry out any reserves. So transfer of any reserves, at that time we have to mention the point that particular this amount which is transferred towards the reserve. Dividend, in case of company which is declaring the dividend of particular this financial year, so we should mention the particular this financial year a particular amount of dividend is declared or not. Next one, that is the material change and commitment of the company. In case of any order received from the RD, NCLT, company or tribunal or any other risk, so we should mention the particular from this entity. For an example, NCLT के पास से हमें कोई order आया है कि ये जो company insolvency में गई है, so at that time we have to mention that we have to receive this order and so dated. So again, this point is important. Next one, any changes in the directorship of the company, any appointment and resignation of director of the company. So again, we should mention this point in the director report of the company. So this is again important point, director responsibility statement. So whenever you have prepared director's report, so you have to taken this all the points related towards the company and each and every information about the company. We should also mention related parties transactions, as I said earlier under section 188 of the Companies Act 2013. So कोई भी related party transactions हुआ है, if it's in arm's length basis or it's not arm's length basis, so we have to mention that the company complied with the related party transactions on the basis of the arm's length basis, and we have to provide this particular information under the EOC too. Foreign exchange, foreign outgoings, foreign earnings, so we have to provide it in each individual annexures. So particular, this is the foreign annexures, foreign outgoing, particular amount which is received from the foreign outgoings. So again, this is important part of the director's report. In case of any committee such as audit committee, nomination remuneration committee, as such private company this provision is not applicable, but if we are talking about the listed company or the public company, this committee is again compulsory. So we have to mention that particular this committee, particular this times this committee meetings held on so and so dated, chairman of particular committee is this, and this directors are the non-executive director of the company. So again, it's an important provision and we should take proper care whenever we are formulated any committee of the company. And in this board of directors report, it should be assigned by the chairperson if it is authorized by the board. Where he is not authorized by at least 2 directors, one of should be the managing directors. So the director report is must be signed by the chairperson of the company, and if it is not authorized, then at least a 2 director of the company, and out of these 2 directors, one of the directors is the managing director of the company. Next one point, that is the holding of annual general meeting under section 96 of the Companies Act 2013. So the every company shall in each year hold, in addition to any other meetings, a general meeting as its annual general meeting. It shall be held within a period of the 6 months from the date of closing of financial year. But in the previous year, we have seen that the 3 months extension, which is provided by the ROC, MCA, वहाँ पे हमें 3 months का extension already 31st December तक मिला था. But next year there are rare chances कि हमें extension मिले. तो ये जो previous year था, this is basically from the 1920, उनकी AGM है वो 31st December 2020 तक हो जाना चाहिए. And after that, notice of AGM, every notice of annual general meeting will be prepared as per section 101 of the Companies Act 2013 and the Secretariat Standard 2. So notice की अगर हम लोग बात करें तो ये जो due to this कोरोना पीरियड बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो लोग AGM हेल्ड नहीं कर पा रही है, उनके अकाउंट्स प्रिपेयर नहीं थे, तो वो लोग को 21 डेज का अगर हम लोग गैप रिमूव करते तो शॉर्टर नोटिस पे भी वो लोग एजीएम उनकी शेड्यूल कर सकते हैं. As such, if we are talking about this shorter notice period, then in the Companies Act 2013 they were not mentioned about the particular days कि shorter notice में आपको
शॉर्टर नोटिस के दौरान आपको कितने दिन का गैप रखना चाहिए, कब आप नोटिस दे सकते हो. सो देयर इज नो सच मेंशन इन द कंपनीज एक्ट 2013. सो विद इन द सिंगल डे यू कैन आल्सो कॉल द एजीएम, और एजीएम आप बुला सकते हो. बट शॉर्टर नोटिस के लिए मैं कहना चाहूंगी कि आपको कंसेंट लेना बहुत ही जरूरी है मेंबर्स की. सो यू शुड टेक प्रॉपर कंसेंट टू ईच एंड एवरी मेंबर्स कि आप शॉर्टर नोटिस के अंदर एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर पाओ. और एन एल्स 21 डेज क्लियर डेज का जो हमारा प्रोविजन है अंडर सेक्शन 101 of the Companies Act 2013, at that time we have to see that the at least 21 days gap होना ही चाहिए annual general meeting के अंदर. Next one question arises, notice of AGM to whom it's to given, to whom it's to send to the company. So a notice of annual general meeting which is sent to all the directors of the company, all the members of the company, statutory auditor of the company, secretarial auditor if it's that, internal auditor again if it is that, and the debenture trustee. So this is again compulsory part that we should give a notice to each and every directors, each and every members, each and every auditors, and each and every debenture trustees of the company. Next one point, that is the circulation of financial statement and other relevant documents under section 136 of the Companies Act 2013. So the company will send to members of the company which is approved the financial statement. So it is like the bunch which is include number first, that is the notice of annual general meeting. Second one, that is the director report. Third one, that is in case of form AOC2 is there. Extract of annual return is there. Proxy form, attendance slip, again it's a compulsory. Venue of particular AGM. And the last one, that is the auditor's report and the financial statement of the company. Then this bunch which we will send to our auditors, directors and members of the company before 21 clear days. But if we schedule our AGM with the shorter notice period, then we can send our notice with for the particular 1 day or the 2 days gap. It must be required. Next one part, that is the if we see in case of AGM which is called on the shorter notice, then above mentioned document should be circulated on each such shorter period for holding the AGM on the shorter notice. Companies need to take the proper approval as per the act. So as I said earlier, if you schedule an AGM on because of the shorter notice period, at that time you have to take the consent from each and every members of the company. Next one, that is the DR3 KYC, Rule 12A. KYC directors, all the directors of the company shall file this form on or before the 30th September each and every year. 30th September, again, it's due date to filing this DIR3 KYC. So before this due date, we have to file the DIR3 KYC form. Again, it is a compulsory and the mandatory form that we have to file each and every year. 30th September, again it's a due date. KYC, again it's an important document. Although who have the DIN number of the particular company, or आपके पास DIN है but आप किसी भी company में director नहीं है, still you have to file this DIR3 KYC. It's a compulsory form. DIR3 KYC now onwards, जिन लोगों ने कंप्लाइंस नहीं किया है टिल द 31st December 2020 DIR3 KYC अपडेट का, अभी उनकी पेनल्टी 5,000 रुपीज हो गई है. एंड अगेन द CFSS scheme is again not extended, so we have to file this penalty if you are filing this form DIR3 KYC. But the due date of filing this DIR3 KYC is 30th September each and every year. This is again all these transactions are covered under the particular second quarter that started from the July, August and September. Going forward, next quarter that we started from the October to December. So the October, the first form that we have to compulsorily file this form. This is the ADT1. ADT1, that is for appointment of auditor under section 139 of the Companies Act 2013. And the auditor will be appointed for the 5 years from the ADT1 will be filed for the 5 years appointment within 15 days of the annual general meeting of the company. So before the 15th day, we have to file this ADT1. If we are talking about in today's scenario, what happened that there's so many companies who are held this annual general meeting on the 31st December 2020. So जिन्होंने उनकी AGM 31st December 2020 को किया है, वो सारी कंपनी को ADT1 on or before 14th January 2021 से पहले फाइल करना था. If you are not filing, then at that time you have to pay the penalties.
So again, for those who have held their AGM in the 31st December 2020, then the due date of filing ADT1, it's the 14th January 2021. So again question is arising, जिन्होंने ऑडिटर की अपॉइंटमेंट 5 साल तक कर लिया है और 5 साल के लिए ADT1 फाइल किया है, तो उनको ईच एंड एवरी ईयर ADT1 फाइल करने की कोई भी जरूरत नहीं है. बट अगर आप ईच एंड एवरी ईयर द कंपनी, सम ऑफ द कंपनीज आर देयर, दे हैव टू चेंज देयर ऑडिटर फॉर द ईच एंड एवरी ईयर. So at that time they have to file this ADT1 in each and every financial year. But again आपने 5 years के लिए वो ADT1 फाइल कर दिया है, at that time ADT1 फिर से आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है. वो AGM के अंदर ऑडिटर है, वो रेगुलराइज हो जाएगा और उनकी रीअपॉइंटमेंट भी हो जाएगी. सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 139 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स ADT1. 5 years period, if you appoint any auditor for the 5 years, then again ADT1 will be filed for the 5 years. If you are appoint any auditor for a particular 1 year, then the ADT1 will be the file for the particular 1 year. But yes, the time period its appointment, it's within 15 days from the annual general meeting of the company. Next one provision, that is form AOC4, that is the annual form under section 137 of the Companies Act 2013, financial statement of the company. So the company which is required to file its balance sheet along with the statement of the profit and loss account, cash flow statement, director's report and auditor's report in this form within 30 days of the holding of the annual general meeting. So it's a compulsory, again if you are holding your annual general meeting, जो आपने जितने भी कंपनी ने उनकी एनुअल जनरल मीटिंग 31 दिसंबर को बताया था, तो वो सारी कंपनी को उनका जो AOC4 है विदिन 30 डेज, सो बिफोर 28 जनवरी 2021 से पहले फाइल करना है. अगेन AOC4 इट्स अ इम्पोर्टेंट पार्ट. At that time we have to attach the director's report, auditor's report, financial statement of the company, cash flow statement. It is important part of the attachment form AOC4. And this attachment, as I said, the balance sheet, statement of profit and loss account, cash flow statement, director's report, auditor's report, and the notice of annual general meeting. Important attachment in AOC4. AOC4 it's generally for that we have to mention the balance sheet as on so and so dated इतनी amount है, balance sheet, profit and loss account, basically वही information हमको provide करना है. Next one point, that is the MJT7. It's a form E-forms, which is a filing annual form. This form, it's again important part. In this form they have to prescribe that the within this financial year how many board meetings are scheduled by particular company. Board meeting के बारे में बताना, annual general meeting, extraordinary general meeting. In case of any particular financial year, in case of any transfer of shares, so we should mention that the particular this shares are transferred from this person to this person, and we should attach the list of shareholder as of 31st/3/2020 or whatsoever the any financial year is there. So again the MGT7 it's an important part, and we have to file this MGT7 annual return within 60 days of the holding of the annual general meeting. So the due date of filing this form, it's from 60 days from the holding of annual general meeting. So अगर आपकी जो AGM which is held on the 31st December 2020, so आपकी जो due date होगा MGT7 के, that is again the before the 28th February 2021. So आपकी due date हो जाएगी 28th February 2021. So again annual return, which will be the period which is started from the 1st April to 31st March, and the annual return of the every private company except the small company should be signed by the company secretary and practices. Either the company secretary sign or either the company secretary in the practices. So again this is again important written and important form. In this form certain companies which is required to take certificate from the practicing company secretary, and the certificate is basically MJT8. So it's a compulsory attachment that we should attach this attachment under the form 7. So this 3 forms is again important: ADT1, AOC4 and MJT7 annual filing. ADT1 it's from within 15 days of holding annual general meeting. AOC4 again it's within 30 days of holding the annual general meeting, and the third one, that is MJT7, it's for within 60 days of the holding of annual general meeting.
Next one, as I said earlier, that is important part of the MGT7, form MGT7 and the MGT8 under section 92 of the Companies Act 2013. So all those are private company who having the paid up share capital of rupees 10 crores or more or turnover of rupees 50 crores or more shall be certified by the company secretary in practices. So जितने भी कंपनी है जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है और टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है, so at that time they have to compulsorily require this certificate from the practicing company secretary. In this certificate they have to specifically mention that the company has compliance with the all the Companies Act 2013 provision, that the company has held a proper board of directors meeting during the year. In case of any events which is arising during the year, such as कंपनी का इंसॉल्वेंसी में अगर गई है तो वहां पे हम मेंशन करना पड़ेगा कि कंपनी इज अंडर द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस एंड ऑल द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस व्हिच इज आर नाउ जो भी है वो अभी कौन देख रहा है, रिजोल्यूशन प्रोफेसर के अभी पूरी कंपनी के हाथ में है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा MGT 8, वहां पे आपको पता चलेगा कि कंपनी ने कौन कौन से नॉन कंप्लायंसेस किए ड्यूरिंग द ईयर अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सो जो बेसिकली company secretary, they have to mention that under this particular provision they have non-compliant. If any company have a non-compliant to file particular forms such as MSME, DPT3 or any other forms or holding of the annual general meetings or any other provisions are there, और उनको लगता है कि नहीं यहाँ पे नॉन कॉम्प्लायंस हुआ है, सो वो जो नॉन कॉम्प्लायंस है and that they have to mention this non-compliance under this MGT8 form. So again, this is important part: MGT7, MGT8, AOC4, and NDT1. Now this is the last quarter, that is we started from the January to March. This quarter we have to check that particular in each financial year we have to held our AGM or not, we have to held our board meeting or not. Each board meeting there is does not gap between the 120 days. So board meetings है जो under section 173 of the Companies Act 2013 and the Secretary Standard 1. So every company shall hold a minimum number of 4 meetings of the board of directors in every years and each and every financial year, and each and every financial years, and there is a maximum gap between the 2 meetings should not be more than 120 days. So we have to check this conditions that between the 2 board meetings there is a does not more than gap between 120 days. And the last one point, that is the maintenance of the statutory registers under section 88 of the Companies Act 2013. Companies will maintain the following register. Again, it is a voluntary basis, so many companies are compliant with the provisions. Electrically भी आप ये particular registers है आप उसको maintain कर सकते हो. So this is again important part. So the registers of directors, what are the, or you can say the, which are the important register that we should be maintained. So the register of director shareholdings, registers of members, registers of transfers, registers of related party transactions, and register of directors. All these registers are important. Next one register is registers of a charge. Register of charges is again important part. ये भी हमें properly maintain करना बहुत ही जरूरी है. So this is all the regulations that we have to compliance under the Companies Act 2013. regulations के साथ साथ हमने अभी forms भी देख लिया, मैंने आपको cross check करवाया है form के साथ, as well as I have to check the due dates कि आपको ये date से पहले आपका compliance करना बहुत ही जरूरी है, otherwise you have to bear the higher penalty amount. This private companies, the compulsory form that they have to file, it's basically the DPT3, MSME1, ADT1, MGT7, and AOC4. This is again this 4 form, it's compulsory. Now again the question arises, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिन्होंने माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को वो लोग सप्लाई कर रहे हैं और उनकी आउटस्टैंडिंग पेमेंट कुछ भी नहीं है, नील अमाउंट है. तो नील अमाउंट है, सो एट दैट टाइम उनको कोई भी फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है. MSME1 फाइल करना तब जरूरी नहीं होगा, बिकॉज आपकी MSME1 इट्स बेसिकली इफ योर आउटस्टैंडिंग पेमेंट इज मोर देन 45 डेज, सो 45 डेज से अगर ज्यादा है, एट दैट टाइम यू हैव टू मेंशन और एट दैट टाइम यू हैव टू फाइल दिस MSME1. Apart from this, if you have the nil amount, zero amount, so you should not have to file
दिस MSME 1 फॉर्म, अगेन दिस MSME 1 फॉर्म, वहां पे कोई भी फीस नहीं है, दिस इज नील फीस। आपको ये वॉलंटरी बेसिस पे ही अपडेट करना है और इन्फॉर्म करना है कि इतने हमारे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस है जिनका आउटस्टैंडिंग पेमेंट इतना है। सो दिस इज अगेन द फॉर्म, वहां पे उसकी कोई भी फीस नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज DPD3 एंड द MJT7 एंड द EOC4, दिस इज द फीस उनकी है, स्टैट्यूटरी फीस दैट वी शुड बी फाइल विद द ROCs, और उनका कंपल्जन भी बहुत ही जरूरी है। आई हैव सीन इन सो मेनी कंपनीज कि उन्होंने अभी तक MSME 1 लास्ट, इफ आई कैन से 2019 का भी फाइल नहीं किया है, 2020 का भी स्टिल फाइल नहीं किया था, तो वो एज अ वॉलंटरी बेसिस पे फाइल कर सकते हैं। देयर इज अगेन कोई उसकी फीस नहीं है, देयर इज नो सच स्टैट्यूटरी फीस ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर फाइलिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्म MSME 1. Next one point, that is the annual compliance of a public company. Till now we discussed about the annual compliance of a private company. So all those private company, they should take care about this regulations which is again compulsory under the Companies Act 2019. All this compulsory form, as I say, that is the MSME 1, DPD3, ADD1, AOC4 and the MJT7. This is the compulsory that we should take care of all these forms and the due date of this particular form. Next one point, that is the annual compliances of the annual compliance of the public company. So public company, the simple definition is the public company which is not the private company. Again, there is a one question whether statutory auditor of company can certify the EOC4. Yes, he can certify the EOC4. There is a no such explanation given under the Companies Act 2013 कि statutory auditor है वो EOC4 को certify नहीं कर सकता है. Yes, they can file. Next one, nil return है. As I said the earlier, nil return है that at that time you do not require to file the MSME 1. And again the DPD3 and MSME 1, the both the case, if there is a nil return, then at that time you have to do not require to file this MSME 1 and DPD3 form. Next one, that is the meaning of public company. As I said, the public company which is not private company and which is provided that the company which is subsidiary company and the not being a private company shall be deemed to be the public company. For the purpose of this act, even with the subsidiary company continues to be the private company. So जो भी private company नहीं है, इसका meaning क्या होता है कि those company is not private company which is treated as a public company. So यहाँ पे उसको public company माना जाएगा. There are again very important features of the public company. It's number 4, that is no need of minimum capital requirement. As I said earlier, that is in the Companies Act 2013. There is again amendment in this provision कि जो भी प्राइवेट कंपनी है और द पब्लिक कंपनी, दे कैन स्टार्ट द बिजनेस विद 0 rupees पेड अप शेयर कैपिटल, और देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम capital requirement. Earlier that was 1 lakh rupees, or you can say the 5 lakh rupees are there, but nowadays if any one person who want to start their business with 0 rupees, they can start their business, because as the Narendra Modi vision is the ease of doing business. So the anyone can start their business with the zero amount of funds, with the 0 rupees capital. But the generally we should prefer to our client that at least 10,000 or the 10,000 or at least 1 lakh capital that they should be start with the particular companies or the LLP. Next one, that is all the shares should not should be in the demat whichever from the 2nd October 2018. So it's a compulsory कि जितने भी public company है उनके shares है dematerialize होने चाहिए. All the shares are not in the way of the physical shares. All the shares are in dematerialization format. If it's across a certain limit of the turnover, net worth of the provision of the secretary auditor shall be applicable on the public company. Next one, that is secretary auditor. Again, it's an important part. Private company ke andar, as I say, there is no such provision to appointment of the internal auditor as well as a secretary auditor. But in case of the public company, if they complied or they exceed the limit of the turnover and the net worth, at that time they have to compulsorily appoint a secretary auditor of that particular company. Next one, that is a minimum number of 7 members is required for a public company. So if you want to start public company, so at that time at least 7 members must be required. Quorum for general meeting shall be presence of at least 5 members. So
In case of the general meetings, the quorum must be at least the 5 members. Next one, that is the loan to directors and the relative of directors are strictly prohibited. So under section 186 of the Companies Act 2013, a loan to directors and loan towards the relative of the director is not given any person, which is again strictly prohibited. Needs to file MGT 14 as I said, and compare with the private company compliances. So if we say section 179 subsection 3 of the Companies Act 2013, there are certain transactions. The transaction which is number first, appointment of internal auditor, appointment of secretarial auditors to borrow the monies, to invest the funds of the companies, to authorize to buyback of any securities, to approve the amalgamation, merger, or the reconstruction, to take over other companies, to approve the financial statement and the board of directors reports. So at that time we have to take the prior approval of the board of directors, and we should be compulsorily file this form. We should compulsorily file forms MJD 14 under regulation 179 subsection 3 of the Companies Act 2013. Next one, provisions of the KMP MD WTD, which is again applicable to companies, which should be checked 203 and the 201 of the Companies Act 2013. Remuneration to directors, again it's restricted. If we are talking with the private company, 197, it's again not applicable to the private company, it's applicable to public company. So जो हमारा provision था 11% of the net profit of the company, so we should be checked so that the company's particular director's remuneration, it's not exceed 11% net profit of the company. So we should take care about this section 197 of the Companies Act 2013. Next one point, that is what are the annual compliances of the public company. Annual compliances of the public company, number first, that is the MGT 14. Public company which is required filing of this form ROC within 30 days, approval of the director's report and the financial statement with ROC. So as I discussed with recently, section 179 subsection 3 of the Companies Act 2013, approval of the director's report and the approval of the audited financial statement of the company, we have to file this form MGT 14 with the ROC within 30 days of the approval of director's report as well as the financial statement with the ROC. Next one transaction, that is band 2 under section 90 of the Companies Act 2013, disclosure of significant beneficial owner. Company shall file band 2 within 30 days of the receipt of the band 1 from the shareholder. On the regular basis of the company have to check whether there is any SBO in a company due to changes in its shareholding or due to change in shareholding of the body corporate members. Again, it's a compulsory form. Band 2, it's not required to file with any private company. Next one, that is half yearly return, which is form PAS 6. Recently introduced this form PAS 6, reconciliation of the share capital audit report, which is like each and every public company. Again, it's required to file this form PAS 6 for the particular, you can say, the half yearly period and reconciliation share capital report with the ROC, which is audited by the practicing company secretary as at the end of the year. April to September, which is 30th October. September due date is 30th October, and October to March, the due date of filing, it's the 30th April. So we should be compulsorily file this reconciliation share capital audit report with the ROC, and the form is a PAS 6. Again, it's recently introduced in the previous year, so it's a responsibility that we should be file this form. This is a form which basically about the particular amount of the shares held in the dematerialization form, particular amount of the shares in the physical mode, in case of there is any changes in the share capital of the company. So ये जो form है, it's basically about the company's shares which is held in dematerialization or the physical में कितने हैं, इसके लिए particular ये form है. In case of any changes in the share capital of the company, so at the time we have to mention in this form. Next one point, that is AOC 4, a financial statement from AOC 4 XBRL. So filing of the financial statement with the registrar.
The following class of the companies shall file their financial statements and other documents under section 137 of the Companies Act 2013, e-form AOC4 XBRL. So AOC4 XBRL, it's a compulsory form for all those companies which is listed with the stock exchange in India and their Indian subsidiaries. Second one, that is the companies which is having the paid up capital of 5 crores rupees or more. Third one, that is a company is having turnover of 100 crores rupees or above. And the last one, that is all the companies which are required to prepare their financial statement in accordance with the company's Indian accounting standards rules 2015. So all those companies which have a compulsorily filed this AOC form XBRL. Again here one question arises, आपकी जो कंपनी थी उसकी टर्नओवर है पहले 2018-19 में पर्टिकुलर 100 करोड़ से ज्यादा था, but particular 2019 में due to this COVID situation the turnover will be reduced, have reduced, so turnover reduce हो गया 50 crores rupees. So should we file AOC for XBRL or should we file only AOC4? And then my answer is we have to compulsorily file AOC for XBRL because once we start filing AOC for XBRL, पहले से आपने स्टार्ट कर दिया AOC for XBRL फाइल करना, तो फिर आपको next year each and every year you have to file this AOC for XBRL form compulsorily file, because once you started this file AOC for XBRL, so it is a compulsory that each and every year you have to file this AOC4 by the way of XBRL mode. Next one, that is the AOC4 CFSs. It's basically the consolidated financial statement. Financial statement which are adopted, then the company shall file this adopted consolidated financial statement and the CFS within 13 days. So as I said, the 30 days time period which is given if you in case of the form AOC4, AOC4 XBRL or AOC4 CFSs. All these three forms will be the file within 30 days of the annual general meeting of the company. 30 days के अंदर ये तीन form हमें file करना है and it's a compulsory part. Next one, that is MR3. It's again compulsory for the public company. MR3 is basically the secretary audit report के बारे में बताया जाएगा और secretary audit के लिए हमें secretary auditor की appointment करना बहुत ही जरूरी है under section 204 of the Companies Act 2013. So basically this is again the specified company that they have to require to appoint practicing company secretary to conduct their secretary auditor of the company. So all the below mentioned company which are required to get the secretary audit of the company from the practicing company secretary, and the format of the report which is given under the MR3 form. And all the listed companies, every public company having the paid up capital of rupees 50 crores rupees or more, or every public company which is having the turnover of rupees 250 crores or more. Every public company, again, it's a paid up share capital 50 crore and the turnover 250 crores or more, and that company it's required to conduct secretary audit from the secretary auditor. It is a compulsory that we should take care of this point कि secretary auditor की appoint करना है. आप जैसे ही appoint करते हो secretary auditor को, तो आपको MJT 14 जो form file करना, again it's a compulsory within 30 days from the passing of the board resolution, or MR3 it's a format of the secretary auditor report. Next one, that is the MR1 which is under section 196 of the Companies Act 2013. 196, it's basically for the return of appointment and the reappointment of the managing directors or the whole-time directors or the manager or the key managerial person of the company. So if the company who is appointing any managing directors or the whole-time directors or the manager or the key managerial personnel, at that time they have to file the MR1 as well as the DIR 12. DIR 12 is basically for the appointment of any directors, appointment of independent woman director, appointment of directors, executive non-executive director. We have to file this DIR 12 form. Apart from this appointment, in case of any resignation of particular director, we should be file this particular form DIR 12, DIR 12 under the Companies Act 2013. Next one, that is the form MJT 14. It's a section 138. So again, this is again the specified company who have a compulsory required to appoint internal auditor of the company. So which is compliant under the Companies Act 2013, which is section 138, and the form is MJT 14. Because as I said earlier, section 179 subsection 3, the specific 7 transaction that we should be filed MJT 14 for this particular transactions. Next one point that is
annual compliance for the listed company. Till now, we discuss annual compliance of a private company as well as the annual compliance of a public company. In this annual compliance of public company, I have not mentioned about this MGT7 form and MGT8 form, MSME1, DPD3, because this is deemed to be assumed. Because as all the compliance which is applicable to the private company, again, which is applicable to the public company. So again, the एडवांस और यू कैन से जो आपको एडिशनल कंप्लायंसेस करना है प्राइवेट कंपनी के तो फिक्स है कि आपको इतने कंप्लायंस करना है, बट उसके अलावा जो आपको कौन कौन से कंप्लायंसेस करने हैं, दैट आई हैव मेंशन इन दिस पर्टिकुलर पेज कि आपको ये पर्टिकुलर कंप्लायंसेस करने हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो बेसिक कंप्लायंसेस तो है, कौन कौन से कंप्लायंसेस है, दिस इज MSME1, DPD3, MGT7 and MGT8. Again, MR3 it's basically secretarial audit report, while the MGT it's basically from the certification. This certification is again compulsory for all the public companies. Second one, this is a point, this is DPD3, it's again compulsory, MSME1 and MGT7. Next one, that is AOC4 XBRL. AOC4 if there is a consolidated financial statement, and we should be file this AOC4 consolidated financial statement. And the next one point that is the MR3 और you can say the appointment of directors. So DIR 12 फाइल करना बहुत ही जरूरी है. MR1 आपको देखना पड़ेगा. MR3 this is for secretary audit report, and MGT 14 all those transactions which is covered in section 179 of the Companies Act 2013. Apart from this, there are certain compliances are there which is basically from the event basis. Event basis such as if any company who is shifted the registered office from one place to another place or from one city to another city, so at that time they have to file this INC 22. INC 22 is basically from a form for the shifting of registered office of the company. So INC 22 file करना हमें बहुत ही जरूरी होगा. Apart from this, in case of any increasing authorized share capital or you can say increasing the paid up share capital, so at that time we have to file this particular form PAS 3. जो भी हमारी प्रोसीजर है, अगर हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट से कर रहे हैं या किससे कर रहे हैं, तो वो हमें फाइल करना जरूरी होगा. बट अगेन आई सेड दिस इज ऑल आर द इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस. इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज or the modification of the charge, so at that time we have to file the CHG1. Satisfaction of charge, at that time we have to file the CHG4. So this is all are the event based compliance. Apart from this, there are again certain compliances are there, वो भी सारी event basis के हैं. Next one important point that I want to discuss with you, जितनी भी कंपनी इंसॉल्वेंसी के अंदर है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड ऑफ इंडिया 2016. So all those company which is again under the process of CIRP, corporate insolvency resolutions process, corporate insolvency resolution plan according to the insolvency bankruptcy code 2016. अभी वो जो कंपनी है उनको भी कंप्लायंस करना जरूरी है. तो वो कंपनी अभी आपको लगेगा कि ऑलरेडी डायरेक्टर्स आर द सस्पेंडेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे कैन नॉट साइन दिस ऑल दिस फॉर्म्स. Now what should we do? How we should file all this form in case of the private companies there or in case of the public companies there? So MCI has issued one circular on the March 2020 in which they have mentioned all the company which are under the CIRP process or corporate insolvency resolution process. So at that time they have to file all these forms for the particular form. उनको ये form जो है GNL2 के अंदर file करना है, and again it's a compulsory to have the AGM भी उनको रखना है. Board meeting, they cannot conduct board meeting, but they can conduct the committee of creditors meeting, that is a COC meeting conduct करना, again it's a compulsory. So here is the point, all these company which are under the CRP process, they have to file all these forms AOC4, MGT7 and MSME1, DPD3, वो GNL2 के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा. So what you should do, आपके उसकी जो PDF copy है, that you should attach in particular form that is under the GNL2, and again it's a compulsion form that we have to file. Next form that is the INC 28.
INC 28 form, it's basically if you received any order from the National Law Company Tribunal, any other court, National Company Law Appellate Tribunal, or any other tribunal. So at that time, you have to file this form INC 28. INC 28 for any particular order which is passed by the National Company Law Tribunal, National Company Law Tribunal. So हमें वो file करना बहुत ही जरूरी है. Next one point, that is the annual compliance of the listed company. So till now I have discussed about the annual compliance of a private companies and annual compliance of a public company. Same, the compliance is again applicable to the annual compliance of the listed company. But whenever we are thinking about the listed company, so we should take care about the SEBI allodial regulations and the corporate governance role model, that the companies must be compliant with the SEBI allodial regulation 2015 as well as the corporate governance rules and regulations. Apart from this, the companies in 2013 के जितने भी compliance है, they have to compulsorily file all this form, they have to compulsorily follow all these rules and regulations. So ये तो उनके लिए compulsory हो ही जाएगा. But ये जो मैंने basics जो हमारे जो forms है MSME 1, DPT 3, MGT 7 and AOC 4, again it's a compulsory that we should be filed for the particular on the due date on the particular time period. Now moving forward, we will discuss about the annual compliance of the listed company. So the listed company, that is the company which has any of its security listed on any recognized stock exchange. So as you all are know, all this company who have listed either the BSE or the NSE. So वो company को listed company माना जाएगा. Next one, that is the point important features of the listed company. So if we see the important features of the listed company, it's all the shares should be in the demat form. जितने भी listed company है उनको compulsorily उनके जितने भी shares है वो dematerialization manner में होना चाहिए. They cannot hold any share in the physical mode. So it's a compulsory कि वो demat mode में होने चाहिए. Next one point, that is the provision of the secretary auditor shall be applicable, because as it's applicable to the public company, the same provision which is again applicable to the listed companies. Loan to directors and relative of directors are strictly prohibited. Again, any company cannot give a loan to any directors or the relative of the directors, and needs to file the MGT 14 as I said the earlier. All the transaction which is covered in section 179 of the the Companies Act 2013, then it's a compulsorily file this MGT 14 with the ROC. Provisions of the KMP and the MDWTT, again it's applicable to the listed company. Remuneration, again it's again the section 179 of the Companies Act 2013. We have to check this provision and we have to check the remuneration should not exceed the 11% of the net profit of the company. Next one, independent directors are mandatory. All the public listed entities are there. They have to compulsorily appoint independent director in their company, and also some of the companies are there. They have to compulsorily appoint independent woman director in that company. So again, the woman independent director criteria is again important. And the top 500 BSE companies and top 1,000 entities, are compulsorily required to appoint independent woman director of the particular company. So the next one point, that is the CEO and the CFO provision. So the CEO and the CFO are again the mandatory to appoint. Next one point, that is again the compliances, various compliances of the listed company. So if we see listed companies, again they have to comply, they have to take care about this two voluntary disclosure, that is MVP 1 and the next one, that is the DIR 8. MVP 1 is disclosure of interest of director, while the second one, that is the disqualification of director, that the कोई भी आपकी company का जो भी director है वो disqualified नहीं होना चाहिए. So on the very first day of financial year, we have to take this disclosure from the directors of the company, MVP 1 as well as the DIR 8. Next one, that is the provisions particular quarterly जो हमें compliance करने थे वो तो आपको देखना ही है. MSME 1 and the DPT 3 and DIR 3 KYC, ये जो तीन form है, again we have to take proper this thing. DIR 3 KYC, as I said earlier, that is the due date of filing is the 30th June, and the next one, that is the DPT 3, the due date is 30th June, while the DIR 3 KYC 30th September is there.
So वो जो compliance है वो compliance आपको proper तरीके से करना है. Next one that is the MJT7. So every company will file this annual return within 60 days of holding of the annual general meeting, and the annual return of the listed company mandatory required signature of the company secretary in employment. So each and every listed entity they must have their own CS in their company. So वहाँ पे जो signature होगी basically from the company secretary perspective, and the annual return need to be filed with the ROC with the digital signature. Of course, it's the directors as well as the company secretary who is in employment of the company. जितने भी listed entity है they have to take particular one certificate, that is the MJT8 certificate. They have to take this certificate from the practicing company secretary. So MJT8 it's compulsory required. Apart from that, very important attachment as I said, that is list of shareholder as and so dated. In case of any transfer of shares which is in between during the year, so they have to take care of this thing. तो वो आपको proper तरीके से complain करना है. Next one that is the MJT8. MJT8, as I said, it is a compulsory that to take the certification from the practicing company secretary. So practicing company secretary के पास से आपको ये certificate लेना है. Certificate is very important as I said, because in this certificate they have to mention is there any non-compliances under the companies in 2013. In case of is there any change in the director of the company? Is there any change? Is there any change? The business affairs of the company, in case of company is not scheduled the board of director between board of directors meeting within 120 days. So वो भी वहाँ पे mention किया होगा. So all those non-compliances you can easily check from the certificate MJTA, and also you can check from the secretary auditor report, because in this secretary audit report they have to given their opinion regarding whether the company have complied with the Companies Act 2013 as well as the Companies Act complied with the Safety and Regulation 2015, apart from the other provisions which are applicable to the company, such as the Factory Act, Minimum Remuneration Act, Wages Act. So जितने भी compliances है, whether the company has complied or not, so they have to take care of all these things, and they have to mention if there is any non-compliance in this particular form MJT8 as well as the secretary auditor report. Next one that is a report on AGM, that is form number 15, section 121 of the Companies Act 2013. In this particular section, that the company shall prepare in the report on each annual general meeting of the company. So the private company and the public company are not required to this file, or it's not required to file this form with the ROC MJT 15. While the listed company, this is again the one additional form you can see in this. One additional form. This form, it's basically the report of the annual general meeting. Report, it's like that how many ordinary resolution is passed, how many special resolution passed, whether the approval from the shareholders are assent or the dissent or not. So this form, it's basically from the perspective of the annual general meeting of the company, from the perspective of the how many ordinary resolution and the special resolution passed under the company. So we should take off all these things. Next one point that is section 108, that is e-voting. So the voting through the electronic means, it is a mandatory for the listed company to provide e-voting facility to shareholders. So again listed entity head, so it's a compulsory that they have to provide voting facility electronically, और उनके जो भी आईडी पासवर्ड्स है कैसे करना है वो उनकी पूरी जो डिटेल्स है नोटिस के साथ वहां पे उनको प्रोवाइड कर दिया होता है कि ये लिंक में आपको जाना है और आप वहां से ई वोटिंग कर सकते हो. Again, all this responsibility of the preparing notice and director reports and AOC2 and everything, it's up to the company secretary, because she and he is liable whether the company is complies all this provision or not. इलेक्ट्रॉनिकली भी वोट कर सकते हैं और बैलेट के थ्रू, पोस्टल बैलेट के थ्रू भी वोट कर सकते हैं. बट ड्यू टू दिस कोविड पीरियड, ईच एंड एवरी कंपनी who were their annual general meetings only and only through the electronically, and they have provided this facility only via through the electronic voting means. So after that, the next year if we can see the जितनी भी कंपनी है वो ई वोटिंग के साथ उनको पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी देना वो बहुत ही जरूरी हो जाएगा. Next one point, that is the secretary auditor and the secretary audit report. If we see the section number 204 and the 205 of the Companies Act 2013. So all the listed company which are required to appoint company secretary for the secretary audit by the filing e-form MJT 14. So
जितने भी company secretary audit, as I said, they have to file this form by filing e-form MGT 14, and the listed company is required to get secretary audit of the company from the practicing company secretary, and the report in the form of MR3 will be the part of director's report. So again, director's report जो part होगा वो MR3 होगा, that is secretary audit report. So all those listed company, they have to attach this secretary audit report in this board of directors report. In fact, they have to attach this corporate governance report. They have to attach the certificate of this particular director, whether the director is not disqualified. They have to attach the certificate of the corporate governance compliances by the company. तो उनका जो भी नोटिस के साथ जो भी अटैचमेंट होगा वो बहुत ही ज्यादा होगा, बिकॉज दिस इज अ लिस्टेड कंपनी. तो उनको कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिपोर्ट है, डायरेक्टर्स का रिपोर्ट है, एक्सटेंट ऑफ एनुअल रिपोर्ट है. Apart from this, if we can see like the compliances of the corporate governance rules and regulations, so all this they have to attach in this particular notice part, or you can say this AGM notice part, director report. Next one, that is the point of internal auditor. Internal auditor section 138, again all the listed company are compulsory required to appoint internal auditor of the company, and they have to file this form MGT 14 within 30 days of the appointment of any internal auditor, or within 30 days from the passing of the board resolution. They have to compulsorily file this MGT 14 form in case of the appointment of internal auditor, or either in case of the appointment of the secretary auditor of the company. Next one point, that is the audit committee under section 177 of the Companies Act 2013. A listed company is required to constitute its audit committee, and meetings of committee will be as per the secretary standard 1. So audit committee, it's again compulsory for all the listed company. And next one, that is nomination and remuneration committee, risk management committee, stakeholder relationship committee. All these committee are compulsory to constitute for all these listed companies. और ये जितने भी कमिटी है, they have to check whether the proper chairperson is appointed or not, because the chairperson is a must be the non-executive director of the company in case of the audit committee, nomination remuneration committee. And the next one point, that is they have to appoint proper director in this particular committee. They have to appoint independent director in this particular committee. Next one, that is the nomination remuneration committee. As I said, that is a compulsory part, section 178 of the Companies Act 2013. So a listed company is required to constitute its nomination remuneration committee and a meeting of committee as per the secretary standard 1. Next one, that is the stakeholder relationship committee, is section 178 of the Companies Act 2013. A listed company is required to constitute its stakeholder relationship committee, and meeting of committee will be as per again secretary standard 1. So all this listed company are compulsorily constitute all these committees, such as nomination remuneration committee, stakeholder relationship committee, audit committee, and all this committee are again compulsory, and they have to compulsory to constitute all this committee. Next one point, that is the vigil mechanism under section 178 of the Companies Act 2013. So a listed company is required to constituting policy of the vigil mechanism. Again, this vigil mechanism is again important part of the director report. So in this director report, we have to mention that the company has a compliance this particular policies or compliance with the vigil mechanism or not. तो वो वहां पे mention करना बहुत ही जरूरी है. All those listed company are compulsorily have their own their website of that particular listed entity. In this website, they have to each quarterly or each half yearly, they have to update their corporate governance report, their shareholding pattern, their notice, the directors report, their annual report of particular company. तो अगेन इट्स अ कंपलसरी पार्ट कि उनको उनकी जो वेबसाइट है वहां पे भी अपडेट करना है, as well as they have to update their BSc website, NSC website, as well as that their particular own website. तो उनको ये बताना बहुत ही जरूरी है. लिस्टेड कंपनी है, द कंप्लायंस इज वेरी compliance बहुत ही ज्यादा है. If we see the listed company the compliances are much more if we compare with the private companies and the public company, because they have to comply not only the companies at 2013, they have to also comply the SEBI LODR regulations 2015. And the SEBI LODR regulations 2015, they have given so many rules and regulations in which we have to follow the compulsory each and every regulation. And if we
if you miss any compliances, कुछ भी compliance आपके रह गए, then the penalty which is comparatively if we compare with the companies at 2013, which is much more higher than the companies at 2013. So again जो भी उनकी website है वहां पे update करना है. Listed entity they have to prepare the proper policy of companies, proper policy उनको frame करना है, ये सारी चीजें उनको compulsory देखना है. This is again the quarterly compliances of the listed company. Number first, that is the regulation 31 sub-regulation 1 subregulation B. Sell loading pattern, it's again the compulsory part कि उनको within 21 days from the end of the each and every quarter they have to take care of this thing कि उनको shareholding pattern जो है वो उनको update करना है BSE की website पे. Corporate governance report, if we see this corporate governance report, then at the time they have to check, so within the 15 days from the end of the quarter, so if the quarter is ended on the 30th September, so before the 15th October we have to file this corporate governance report. Next one, that is regulation 33 subsection 3 subsection A, financial results along with the limited review report and the auditor's report. So within 45 days from the end of the quarter, so within 45 days के अंदर आपको financial statement है. Once the quarter ended, if the quarter is ended on the 30th September, then we have to file this financial results and the statement within 45 days from the end of the quarter. Reconciliation of the share capital audit report, so it's within the 30 days from the end of the quarter. So reconciliation जो भी है share capital audit report, if we see in this public company compliance that we have to file this form PAS 6 in the public company, but the listed company we have to file this particular reconciliation of the share capital audit report, which is certified by the practicing company secretary within 30 days from the end of the quarter. Regulation 13 subsection 3, which is the statement of the grievances redressal mechanisms. This is within a 21 days from the end of the quarter. So in case of any query which is not resolved, in case of any grievances which is not resolved at the end of the particular quarter, then we have to mention in this particular compliances that particular so and so queries are not resolved, these queries are resolved at the end of this particular quarter. So again, this is a quarterly compliances of, and this is only quarterly compliances for the listed company. This is the half yearly compliances for the particular listed entity. Number first, regulation 7 subregulation 3 share transfer agent and the compliance certificate. So within 1 month of the end of the each financial year, we have to take the certificate from the share transfer agent. So in case of our share transfer agent, जो भी है उनके पास हमें ये सर्टिफिकेट कलेक्ट करना है. We have to update this certificate from the BSE website और वहां पे जाके सिर्फ हमें अपडेट करना है. And the last one, that is the regulation 40 subregulation 10 transfer or the transmission or the transposition of the securities within 1 month from the end of the each financial year. So if we see साल में 2 बार आपको ये regulations का certificate provide करना है. Regulation 40 subregulation 10. This is the certificate in which in case of any practicing company secretary who certified, so they were mentioned that the particular this amount of the shares transfer from this person to this person. So it's basically one regulation which provided regarding the transfer of securities from one person to another person. So this is all this about the half yearly compliances of the listed company. Next one, that is the annual compliance of the listed entity. So this is annual compliances is basically from number first, if we see this is the regulation 14, fees and other charges to be paid to the recognized stock exchange. So this is our responsibility that we have to file this particular fees with the stock exchange within 1 month of the end of the March 31st. So March 31st से पहले जैसे end आ रहा है उससे पहले we have to file the stock exchange fees. Next one, that is the regulation 24A, secretary audit compliance reporting. So once this report received from the practicing company secretary, we should submit this report within 60 days of the end of the financial year. Financial year जैसे भी end होता है तो उसके 60 days के अंदर आपको ये provide करना है. Now there is one such new provision of this, the new provision which is related कि public company है उनकी जितनी subsidiaries company है, so the subsidiary company को भी ये compulsory होगा 24A का compliance करना,
और ये उनको कंपलसरी फाइल करना रहेगा. सो 24A सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट आपको लिस्टेड एंटिटी एज वेल एज देयर इज उनकी जितनी भी सब्सिडरीज कंपनी है, अनलिस्टेड मटेरियल सब्सिडरीज. So all those unlisted material subsidiaries, they have to again compulsorily give this 24A compliance certificate. So listed entity as well as unlisted material subsidiary दोनों को ये 24A देना compulsory हो जाएगा. Financials reports results along with the auditors reports, so within 60 days from the end of the financial year. So again it's a compulsory that we have to take care of this provision. Financial results है, जैसे आपका financial year end होता है, within 60 days we have to provide this certificate. Update आपको करना है. And the last one that is annual report. 21 clear days AGM है, उसके 21 clear days से पहले जैसे ही आप आपकी notice के साथ जो मैंने आपके सारे attachment बताए थे, all this attachment and the notice must be published on the website of entity as well as a BSc website and must be sent to each and every individual members, debenture trustee, auditors, secretary auditors, or each and every directors of the company. So all these responsibilities and the duties of the company secretary of particular company who should take care of all this compliance and who should take care of all these things, ये properly time period के अंदर ये हो जाना बहुत ही जरूरी है. Next one and the last portion, that is the annual compliance of LLP portion. Again nowadays the LLP maximum जो clients है, they are we give advice कि LLP ही वो लोग form करें. So LLP is the best option है. जहाँ पे best option क्यों है? Because वहाँ पे सिर्फ आपको दो ही compliance करने हैं. If we compare with the private company, public company, listed company, where the compliances are more and the burden of compliance is again the more. But the LLP, you have to do only the 2 compliance in each financial year. The cost of the particular fees are again the less compared to the private company fees. So limited liability partnership firm, which is again the treated as a body corporate under section 2 subsection 1 subsection B of the LLP provision, again which is be treated as a separate legal entity, because jitni bhi LLP hai, which is treated as a separate legal entity. Third one point, that is the perpetual succession. तो जो भी LLP है, if they want to the strike off of this particular LLP, they can close LLP at any point of time, as like as a private company भी close करना है, you can do it completely, आप close कर सकते हो. Profit motive, each and every LLP have their profit motive. LLP की अगर हम लोग बात करते हो तो there is a minimum 2 partners and the maximum there is no limit. So at least if you want to start any LLP, so at least they have at least 2 designated partner, or you can say at least 2 partners in their company. But yes, I have to share one viewpoint. Some of the times what happened that in LLP form, if you want to start any LLP, so at that time you have to file this flip form जो अभी नया recently launch हुआ है. अभी आपके जितने भी designated partner है और the partner है, if the partner who don't have any partners के पास कोई डीन नंबर नहीं है आपके पार्टनर्स के पास, सो एट दैट टाइम अभी आप क्या करोगे, तो डीन नंबर सिर्फ 2 ही पार्टनर्स का मिलेगा, बाकी के पार्टनर्स का यहाँ पे डीन नंबर प्रोवाइड नहीं होगा. सो वो चीज का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है. Next one point, that is no applicability of the partnership act under section 4. So there is no such applicability of the partnership act का कोई भी वहाँ पे provisions नहीं होगा. Annual compliances, there is only the 2 compliances are there. Post compliances, if one can see, that is the LLP form 8 and the LLP form 11. दो ही compliances है जो आपको करना है. Form LLP 8 is basically from the financial statement perspective, जो भी है वो आपको वहाँ पे attach करके उनका financials proper करना है. LLP 11 is basically designated partner. In case of any changes, designated partner that we should be mentioned in this particular form. Next one, even if LLP does not content any business, कोई भी LLP है but आपकी कोई भी business run नहीं करनी, कुछ भी नहीं है, at that time still they have to file this LLP 8 and LLP 11 form. And the post incorporation requirement are the obligation which LLP are supposed to fulfill the subsequent to the incorporation. This include the filing of annual return, changes in partner, resident alteration, contribution, changes in the register office of the company. So LLP है कुछ भी, for an example they want to register their charge, तो LLP form 8 है. बाकी उसके अलावा LLP 8 और LLP 11 there are certain other voluntary basis compliance, तो वो भी वो लोग कर सकते हैं.
बट ये जो कंपलसरी प्रोविजन जैसे मैंने आपको बताया LLP 8 एंड LLP 11 दैट इज अगेन द कंपलसरी फॉर्म दैट वी हैव टू कंपलसरी फाइल दिस फॉर्म, वो आपको कंपलसरी आपको वो फॉर्म फाइल करना जरूरी रहेगा। बाकी जैसे मैंने आपको बताया एनुअल अकाउंट्स है ट्रू एंड फेयर, आपका कोई बिजनेस आपने LLP बनाया बट कोई बिजनेस नहीं रन रहा है, स्टिल यू हैव टू फाइल दिस form. Still you have to file this LLP 8 and LLP 11 form. All this is in the today's webinar. I am discuss about the annual compliance of the company, annual compliance of the company, annual compliance of the private company, annual compliance for the public company, and annual compliance of the listed companies. So there are so many compliances are there. बहुत सारे compliances हमने देखे, burden of compliances are again very high. LLP के बारे में मैंने जैसे आपको बताया था, again LLP के compliances are very less, जो आपको वहाँ पे सिर्फ 2 ही compliance करने रहेंगे. So all these compliances are there. Still you have any doubt in any compliances you may ask. Yashvi ji, few questions are there in the chat box. Apart from this, I request to cover certain points related party disclosures under section 188, if you can. Okay. First of all, on behalf of Vishnudali Study Circle, I would like to welcome CS Sumit Garg ji. Sumit ji, welcome है आपका. Thank you, sir. Thank you. Friends, yeah, please continue कीजिए आप. I have no issues. Thank you. नहीं, thank you संदीप जी. And मैंने कहा कि कुछ value addition हो जाए apart from these questions. एक Yashri, can you cover on this 188 section? Yeah, sure, sir. A few important points you can add. What transactions need to show and where regarding related party transactions under section 188. Okay, sure, sir. बाकी तो जो भी questions है, I have resolved the doubt related to if the DPD3 is nil written at that time, तो फिर आपको फाइल करना जरूरत नहीं है. MJ जी, MSME 1 if there is a nil written है तो भी आपको फाइल करना जरूरी नहीं है. Second है statutory auditor ने auditor report दिया है तो EOC 4 के अंदर उसकी signature आ सकती है. Yes, उनकी DSC आप affix कर सकते हो. There is no such provisions is there. Next one question is how we can close LLP form 8 and already file. LLP closer है तो उसकी आपकी पूरी जो strike off की procedures है तो वो आपको follow करना रहेगा. उनकी जो form 4, 5 है वो आपको file करना रहेगा और आप strike off within 6 month के अंदर कर सकते हो. Apart from this, जैसे सर ने मुझे अभी बताया कि related party transaction के व्यू पॉइंट में ऐड करूं तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ. Related party transaction it's basically कि जहाँ पे आपको फर्स्ट आपको ये देखना है कि the transaction which is arm's length basis or not. If the transaction is arm's length basis, अभी arm's length basis पे हो तो आपको board of director का resolution पास करना बहुत ही जरूरी है. Under section 188 they have to provide certain transactions such as if we see a sell and purchase or the supply of any goods and materials. So कोई भी कंपनी है वो कोई sell supply goods and materials supply कर रही है या तो कोई वो leasing of property कोई भी property को lease पे दे रही है या तो rent या तो director ने कोई भी property को rent पे दिया है. Availing any rendering or any services. Next one that is the office in place of profit. Director का remuneration की if अगर हम लोग देखने जाए कि director का remuneration provide कर रहे हो again which is covered under this related party transactions because directors remuneration are again covered under this related party transactions. So we have to check whether this transaction is covered under the arm's length price. जैसे भी हम लोग check करते हैं this is arm's length basis or not, at that time we have to check the particular again condition 197 कि आपकी जो remuneration की amount है वो exceed the 11% of the net profit ना होना चाहिए और उसका reflection आपको ये related party के transactions के साथ बताना है कि जो भी remuneration आप provide कर रहे हो वो exceed limit arm's length basis पे होना चाहिए. arm's length basis पे हो तो आपको EOC 2 के अंदर maximum companies के अंदर ऐसा होता है कि उनके जो ट्रांजेक्शंस होते हैं वो आर्म्स लेंथ बेसिस पे ही होते हैं. नाउ समटाइम्स अगेन इट्स अ क्रिटिकल क्वेश्चन अराइजेस कि वो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे इट्स आर्म्स लेंथ बेसिस पे है या नहीं. तो वो हमें मार्केट प्राइस के साथ हम लोग कंपेयर करते हैं कि अगर आपको मैंने इतने पैसे में दिया तो मार्केट में मैं ये रेट में देती हूँ तो वेदर इट्स आर्म्स लेंथ बेसिस और नॉट. तो ये जनरली ऑडिटर ही हमें आंसर देते हैं कि वेदर दिस ट्रांजैक्शन इज पर्टिकुलर आर्म्स लेंथ बेसिस और नॉट.
आर्म्स लेंथ बेसिस पे है और ट्रिगर कर रही है कोई लिमिट, तो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना जरूरी है। सो बोर्ड रिजोल्यूशन कंसेंट लेना जरूरी है कि ये जो पार्टी है रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन के साथ इतनी सारी चीजें हो रही है। बट ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया, ऑफिस इन प्लेस ऑफ प्रॉफिट, वेयर सच ऑफिस इन प्लेस व्हिच इज हेल्ड बाय डायरेक्टर, इफ द डायरेक्टर व्हिच इज होल्डिंग इट्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी, कोई भी डायरेक्टर है कंपनी से कोई चीज रिसीव कर रहा है, रिसीव दैट मींस रेम्यूनरेशन, यू कैन से द सैलरी, यू कैन से द प्रॉफिट इन ल्यू, एनीथिंग एल्स, बट वो आपको वहां पे ओसी 4 में डिस्क्लोज करना बहुत ही जरूरी। Okay. I think it will be applicable on private company also. Yes sir, प्राइवेट कंपनी को भी एप्लीकेबल है। Okay. I think you have covered the query. Sunny Behelji is asking if we have filed the form 8 and 11, how we can close now. हाँ, मैंने सर बताया कि उनको आपकी स्ट्राइक ऑफ की जो प्रोसीजर्स हमारी है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। 8 एंड 11 तो आपने फाइल कर दिया, दैट्स इट, बट उनकी जो एलएलपी स्ट्राइक ऑफ की जो प्रोविजंस है वहां पे आपको अगेन नील बैलेंस शीट विद दैट वी हैव टू चेक होना चाहिए, और जो फॉर्म्स वहां पे 3 और 4 प्रिस्क्राइब किया है वो आपको फाइल करना है। Right. Sandeep ji, अगर any other query एक क्वेरी है रामचंद्र भट्ट जी की कि compliances are same for 1% company as private limited company. Sorry sir, compliances are same for 1% company as the there are private certain company? exemption given to the 1% company. Hmm. Okay, there is again one question from Rahul Gupta sir. Is ADT1 is a compulsorily filed by the first auditor? फर्स्ट ऑडिटर के लिए नहीं एग्जेम्पशन यहाँ पे प्रोवाइड किया है। एजीएम जैसे होगा वहां पे उसके बाद आप फाइल करो तो दैट इज वेल एंड गुड, उसके अंदर कुछ इतना कंपलसरी नहीं है। Okay. Still you have any query or any doubt, you can send me a mail at the cshashradikshit@gmail.com. Yashri, one more question is there. अगर कोई ऑडिटर मिड टर्म में रिजाइन करता है तो व्हाट इज द प्रोसीजर टू अपॉइंट दैट न्यू ऑडिटर्स? Okay, mid time that means before the financial year closure sir? जी राइट। Yes. ओके तो उसके अंदर सर क्या होता है कि दैट इज अ कैजुअल वैकेंसी अराइजेस एट दैट टाइम, हमें एडीटी 3 फॉर्म फाइल करना रहेगा। एडीटी 3 फॉर्म इट्स बेसिकली एडीटी 3 फॉर्म इज बेसिकली रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर, तो रेजिग्नेशन वो देगा, उसके बाद हमें फिर से एडीटी 1 अपॉइंटमेंट ऑफ इन केस ऑफ द कैजुअल वैकेंसी हमें अपॉइंट करना है उसको। तो कंपनी विल अपॉइंट दिस इन द ईजीएम और बोर्ड मीटिंग? बोर्ड मीटिंग में भी सर आप बुला सकते हो। Okay, from within 30 days from the I think within यस, 30 रेजिग्नेशन जैसे होता है तो आप उसको कैजुअल वैकेंसी में कर सकते हो। कोई टाइमलाइन है? आई एम आस्किंग कि विदिन 30 डेज करना है और अदर वी कैन अपॉइंट न्यू ऑडिटर विदिन नो पीरियड टाइम लिमिट? As such, if we see the companies in 2013, so सर वहां पे ऐसा नहीं दिया है कि आपको इतने डेज के अंदर ही ये चीज का कॉम्प्लेन का 30 डेज या 60 डेज, बट बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमें रेजिग्नेशन आ जाता है इन बिटवीन द ईयर, सो विद इन 30 डेज के अंदर हम लोग क्या करते, तुरंत ही बोर्ड मीटिंग बुला के फिर वो एडीटी 1 अपॉइंटमेंट ऑफ कैजुअल वैकेंसी फाइल करते थे। I think you have covered very well all the compliances regarding private and public company, सभी के रिगार्डिंग कवर कर लिए। Still संदीप जी, any other point you have in mind? मुझे थोड़े से प्रैक्टिकल क्वेरीज मेरे दिन आ रही है मुझे, है ना, एंड इफ यशरी जी वुड लाइक टू हेल्प इट आउट। यशरी जी, कभी जैसे हमारी जो फाइलिंग होती है तो आरओसी की भी जो फाइलिंग करेंगे तो व्हाट आई अंडरस्टूड कि यूडीन जनरेट करना पड़ेगा कई चीजों में, करेक्ट? समटाइम्स कभी कभी क्या होता है कि आप वर्क का बोलो या कुछ मिस हो गई, आपकी यूडीन जनरेट आपने नहीं की। एग्जैक्टली, व्हाट इज द सॉल्यूशन? अभी तो सर आपको वो एग्जेम्पशन मिला है ना कि आपके कभी भी यूडीआई जनरेट कर सकते हो बैकडेटेड के अंदर। नो मैडम, वो एग्जाम्पशन पर्टिकुलरली 31 दिसंबर के लिए थी। आज की डेट में मैं सभी मेंबर्स को बताना चाहूंगा
ऐसा नहीं है कि आज 1 जनवरी का हम यूडिन आज की डेट में जनरेट कर सकते हैं, नो, डेट एग्जम्पशंस वाज टिल 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर तक के जो यूडिन पेंडिंग थे वो हम जनरेट कर सकते हैं। आज 18th है, अगर हम 1 जनवरी का जनरेट करना चाहें तो नहीं कर सकते। तो इसलिए फ्यूचर में हमें टेक केयर करना है कि रियल टाइम में यूडिन जनरेट करके चलें, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर ईच वन ऑफ यस अस। यस, ये बहुत ही इश्यू सीए के, मतलब आपका होता है कि यूडीएन, हमारा क्या होता है कि हमारे बहुत ही कम फॉर्म के अंदर यूडीआईएन है, एमजेटी8 के सर्टिफिकेट है और सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट, और बहुत ही कम। अभी आपके क्या हो गया कि ईच एंड एवरी सर्टिफिकेट यू हैव टू मेंशन योर यूडीआईएन नंबर, देन इट वुड बी ट्रबलसम। आप बैकडेटेड तो कुछ नहीं दे सकते, इनफैक्ट बैकडेटेड मतलब लास्ट 10 डेज तक दे सकते हो, उसके बाद का तो आप दे ही नहीं सकते हो। यशवी जी, एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि यूडिन हमें 1 जनरेट करना है या 2 जनरेट करने हैं फॉर एओसी 4 एंड एमजीटी 7? अगर हमने आज के दिन अप्लाई किए तो 1 यूडिन जनरेट करना है या 2 करने हैं? मतलब सर आई एम नॉट गेट इट, एओसी 4 के अंदर तो ऑडिटर रिपोर्ट का तो अच्छा, ओके, आपने ऑडिटर, यूडीआईएन किया ही होगा, और अगर एमजेटी 8 मैंने सबमिट किया है तो मेरा यूडीआईएन होगा वहां पे। नहीं नो, इफ सीए इज फाइलिंग एमजीटी 7 और एओसी 4 by their signature, then whether CA is required to generate 1 UDIN or 2 UDIN? अच्छा, तो वहां पे उनको एक यूडीआईएन चले, एक यूडीआईएन से हो जाएगा। 1 UDIN से हो जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन। यशरी जी, मानसी नरूला जी की क्वेरी है, do we have any way out that can prevent us from penalty if we haven't filed DBT3 for financial year 2019-20? Now it will be very difficult because CFS scheme, all are know that the CFS scheme extend नहीं हुआ है, तो फिर आप ये पास के जो डॉक्यूमेंट है अभी आप फाइल नहीं कर पाओगे, वो पेनल्टी के साथ आपको पे करना पड़ेगा। नो रिलैक्सेशन। वो रिलैक्सेशन नहीं है आपको। यस। चलिए, यशरी जी, कभी-कभी क्या होता है कि आप जब कभी फाइल करते हो, ऑल ऑफ अ सडन जब आपके पास चीजें आती है या मतलब नया क्लाइंट आया, आपने उसकी चीजें देखनी स्टार्ट कर दी, इसी पीरियड में क्या होता है कि यू कम टू नो कि नहीं यार, लास्ट ईयर तो रिटर्न फाइल जो हमने एओसी 04 था या कुछ थी रिटर्न थी, हमने तो गलत फाइल कर दिया था, है ना? तो आपकी क्या सजेशन है, आप क्या सजेस्ट करते हो, व्हाट शुड वी डू नाउ? कभी फाइलिंग में हमें क्या करना चाहिए? मतलब गलती हो गई सर, ऐसा ना? हाँ जी जी जी। अच्छा, और उसमें मिस्टेक से वो न्यूमेरिकल नंबर आ गए थे। जो भी है, मतलब कई सारी चीजें नंबर गलत भी हो गई, रादर कि हमने जो फाइनेंशियल्स के नंबर मुझे थे ऐसा, गलत हो मैं गए। यहाँ पे ऐसी एडवाइस दूंगी कि सर आप यहाँ पे रिवाइज्ड भी फाइल्स कर सकते हो, रिवाइज्ड एओसी 4, और रिवाइज्ड एओसी 4 की ऑप्शन उसके अंदर आता ही है, तो यू शुड फाइल दिस रिवाइज्ड एओसी 4 आफ्टर, जैसे आपको पता चला कि नहीं ये मिस्टेक हुआ है तो उसके तुरंत आप रिवाइज्ड एओसी 4 फाइल कर दो। नहीं तो पहले हम करंट ईयर का काम कंप्लीट कर ले या पहले रिवाइज फाइल करते हैं देन करंट ईयर का करें? पहले सर रिवाइज कर लो, क्योंकि करंट ईयर में भी आप वो फिगर डालोगे तो वो फिर वहां पे वहीं पे वो लोग पूछेंगे ना कि यहाँ पे तो वो पुरानी फिगर थी, आपके कहाँ से वो आई, इसलिए। करेक्ट, पहले रिवाइज कर ले देन इसके बाद फाइल करें। यस सर। सुमित जी, आपकी कुछ क्वेरी? नहीं, आई थिंक वेरी वेल कवर्ड। यशरी जी ने सारी क्वेरी रिगार्डिंग एमसीए कंप्लायंसेस कवर कर ली है। यशरी जी, वी हैव सम टाइम, है ना? टाइम अराउंड हमारे पास जस्ट अ मिनट, 20 मिनट्स टाइम भी है। 20 मिनट्स टाइम है ना? ओके। और मैं मेंबर्स की बेनिफिट के लिए थोड़ा सा अगर आप परमिट करें तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप थोड़ी सी चीजें ना हमें गाइड करो, बिकॉज आई थिंक सीएस इंस्टीट्यूट ने कई सारी मास्टर क्लासेस भी स्टार्ट कर दी है रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट? यस सर। तो सी यशरी जी, जस्ट आई एम, मतलब मैं थोड़ा सा रिट्रैक जा रहा हूँ इस टॉपिक से। वी हैव वेरी स्टार्टअप्स, राइट? हमारे पास स्टार्टअप्स होता है, आपके पास भी है, काफी लोग डील भी कर रहे हैं स्टार्टअप्स में। तो स्टार्टअप्स में क्या होता है कि वी यूज टू इशू शेयर्स, है ना? हम शेयर्स प्रमोटर्स जो होते हैं उसको, या जो स्टार्टअप क्रिएट करते हैं वो बनाते हैं एज एंड व्हेन, जैसे जैसे उसमें वो मैन पावर ऐड करते हैं या पार्टनर्स मिलते हैं उसको ऐड ऑन करते जाते हैं और दे स्टार्ट गिविंग शेयर्स टू ऑल, है ना? फिर कभी कभी बीच में ये भी होता है कि भाई हमें कंट्रोलिंग स्टेक नहीं देनी उनको, है ना?
हमें शेयर्स देने, कंट्रोलिंग स्टेक नहीं देनी है। एक तो ये सिनेरियो होता है केस 1 कि भाई हम उसके शेयर्स की हमें कैसे करनी चाहिए। इन ब्रीफ, आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, बट इन ब्रीफ की थोड़ा सा स्टार्टअप्स है, तो अगर स्टार्टअप्स में हमें शेयर की जो इशू करनी है तो उसकी क्या प्रोसेसिंग होनी चाहिए, कैसे प्रोसेस करना चाहिए। सेकंड, इसमें थोड़ा सा हम एड ऑन अगर कर लें, इसी हमने कुछ फंड रेज किया, लेट सपोज हमने स्टार्टअप में प्राइवेट प्लेसमेंट से फंड लिया, राइट, एंड प्राइवेट प्लेसमेंट से फंड लिया एंड वी डोंट वांट टू गिव हिम शेयर्स राइट अवे, हम एकदम से शेयर्स नहीं देना चाहते, तो हम उससे कभी हम कन्वर्टेबल डिवेंचर में ले लिया हमने या किसी और चीज में। तो व्हाट इज द राइट वे टू मतलब रेज फंड एंड ऑल, है ना। थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया अगर आप दे दे 10-15 मिनट का, सो दैट हमारी कोई नेक्स्ट सेशन का मतलब हम उसकी आउटलाइन कर लें कि भाई हम नेक्स्ट सेशन अब इस पे करने वाले हैं, तो स्टार्टअप्स की फंडिंग, कंप्लायंसेस और शेयर्स वगैरह कैसे इशू करनी चाहिए एंड ऑल, है ना, तो अच्छा रहेगा सबके लिए। ठीक है। और भी सर मैं एक चीज बताना चाहूंगी, इसके साथ ट्रेडमार्क अगर मैं लिंक करूँ तो दैट वुड बी आल्सो बेटर टू ऑल, बिकॉज स्टार्टअप के साथ ट्रेडमार्क का लिंक करना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज हमारे प्रोफेशन में ये ट्रेडमार्क का नॉलेज बहुत ही कम लोगों के पास है सर, इफ आई कैन सी। तो ट्रेडमार्क इट्स लाइक अ ब्रांड ऑफ अ कंपनी, क्योंकि जैसे आपने मुझे स्टार्टअप के बारे में बताया, तो स्टार्टअप इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट है। आज जो स्टार्टअप कर रहे हैं उनको कुछ भी आइडिया नहीं है, द प्रोफेशनल ही है जो उनको एडवाइस दे रहे हैं, तो वो हमें उनको बिजनेस के बारे में भी बताना है, प्लस हमें ये भी बताना है कि आप आपका जो लोगो वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। सो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर टू डिस्कशन। मैंने ऑलरेडी सुमित सर के वहां पे ऑलरेडी सेशन लिया ही था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। तो अगेन इट्स अ वेरी बेनिफिट टू ऑल द प्रोफेशनल दैट दे हैव टू टेक केयर कि उनको लोगो है, आपको ये भी बताना है कि स्टार्टअप में आप फंड्स तो कैसे रेज कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम आप आपके लोगो को भी कैसे सिक्योर कर सकते हो, बिकॉज नाउअडेज लोगो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी आपके नाम से कोई भी बिजनेस कर सकता है, कोई भी फ्रॉड हो सकता है, तो हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर लोगो एंड हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक द ट्रेडमार्क जो भी स्टार्टअप्स है। एंड इनफैक्ट स्टार्टअप इंडिया बेनिफिट्स जो SSIP है, उन लोगों ने ये ट्रेडमार्क और ये सारे बिजनेस के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स दिए हैं। वो लोग 50% 80% विदाउट एनी स्टेशनरी फीस आप आपके फाइल कर सकते हो, बहुत सारे एग्जम्पशंस की बेनिफिट्स प्रोवाइड किया है। आपके कैसे आपके पार्टनर्स को वहां पे हम लोग ये भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप आपके कैसे LLP के थ्रू आपकी बिजनेस आप रन कर सकते हो, या तो आपका बेटर है कि स्टार्टअप इंडिया है तो आपका प्राइवेट कंपनी के थ्रू ही होना बहुत ही जरूरी है। प्राइवेट कंपनी से ही आप आपका बिजनेस पहले शुरू करो, फिर बाद में आप प्राइवेट कंपनी करो, फिर बाद में आप पब्लिक कंपनी तक लेके जाओ। और LLP में भी कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ये सब भी आप वही स्टार्टअप इंडिया में आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। थोड़ा सा यशवी जी अगर आप शेयर्स के बारे में बताएं कि बिकॉज सी कई बार क्या होता है जब स्टार्टअप्स आप इशू करते हैं तो विल हैव फ्यू पार्टनर्स और आपको लगता है भाई शेयर्स देने हैं, बाकी चीजें नहीं देनी इनको, या हमारे ये होता है कि भाई हम अपने पास राइट टू सेल का मतलब हम अपने पास फर्स्ट राइट रखें कि वो किसी और को शेयर सेल ना कर पाए, राइट। तो पहले अगर शेयर उसे सेल करनी है तो फर्स्ट ही और शी शुड कम टू मी, पहले मुझे ऑफर हो, देन मैं अगर उसको एक्सेप्ट ना करूं देन ही और शी शुड सेल टू एनी अदर पर्सन और थर्ड पर्सन। तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं ब्रीफ आइडिया से समझना चाह रहा था, एक आउटलाइन अगर आप गाइड करें तो आई थिंक दैट वुड बी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ अस। Sure, sir. Just give me 1 minute, sir. I think यशवी जी कुछ साउंड में कुछ इशू आ रही है आपकी। Your voice is not clear. Yes, yes. मेरे साउंड में कोई इशू आ रहा है, मुझे एक्चुअली कुछ नहीं सुनाई दे रहा एग्जैक्टली। हाँ, that's why we are also not able to listen. संदीप जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। नो हाँ यशवी प्लीज रिकनेक्ट। संदीप जी आपने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन पूछा मेंबर्स के बिहाफ पे कि कहीं ना कहीं स्टार्टअप में किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन बेनिफिट्स एंड शेयर्स अलॉटमेंट इन चीजों का बेनिफिट। सी दिस इज द टाइम। इसमें क्या होता है कि नॉट ओनली आप अपने क्लाइंटों को क्लोज करते हो, राइट, आपकी फाइलिंग कंप्लीट करते हो, बट उसके साथ क्या होता है कि बहुत सारी डिस्कशन भी होती है। बॉस फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर आई विल स्टार्ट दिस, आई विल स्टार्ट दैट, है ना, और चलो मेरे साथ तो ये दो काम चल रहे हैं, मेरा तीसरा काम ये भी है।
So this is the डेफिनेटली right जब time. हमारा सीए का एक माइंड है तो मैं सभी मेंबर्स के कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं हमारा एक एनालिटिकल माइंड भी यूज करते हैं हम लोग कि किस तरह मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें कंपनी एक्ट का या जो स्कीम्स हैं कंपनी बनाने की टैक्सेशन में या गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं। तो डेफिनेटली हमें समझने की वो ज़रूरत है और उसके साथ ही हम कंप्लायंसेस तो ठीक है, जो हमें करनी है अगर हमारी कंपनी है उसके अकॉर्डिंग वो हम करेंगे। But what benefit government is providing to MSME, startups and other taxation part? संदीप जी बहुत अच्छा सेशन प्लान किया आपने जहाँ पर यश्री मैडम ज्वाइनिंग वेरी सुन। Thank you, Sumit ji. Thanks a lot. और सी आई थिंक यशवी जी रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, है ना। इन द मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तो थोड़ा सा आप अपने व्यूज रखें कि स्टार्टअप्स में हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आई थिंक बीइंग एन एनआईसी मेंबर आप हमारे लीडर हो, and I should Definitely संदीप जी, thank you for giving opportunity and inviting। बट जो हमारा टॉपिक था आज का डिस्कशन जो कंपनी कंप्लायंसेस चल रहा था, साथ में आपने जो ऐड किया कि एमएसएमई स्टार्टअप्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले हमें स्टार्टअप्स की जो मिनिस्ट्री में अपने आप को इम्पैनल कराना है और उसके बाद जो यश्री जी ने भी हाईलाइट की थी वेरियस स्कीम जो हम बेनिफिट ले सकते हैं, तो किस तरह से हमें बेनिफिट लेना है उनको एक बार एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम रजिस्टर्ड नहीं होंगे तब तक हम बेनिफिट नहीं ले सकते उस चीज का। एंड आई थिंक यश्री जी योर वॉइस आपको आ रही है क्लियर अब? यस यस सर, अभी आपको आ रही है क्लियर? ना इट्स क्लियर, बिल्कुल परफेक्ट है। तो संदीप जी का एक क्वेश्चन था जो हम आपसे सुनना चाहेंगे फर्दर। यस सर। कि स्टार्टअप्स को किस तरह से हम शेयर अलॉटमेंट या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनके एडवांटेज हम ले सकते हैं, उस पर थोड़ा सा एक बार लाइट डालें। अच्छा, स्टार्टअप की जो स्कीम है अगर हम लोग उसको बात करें, जैसे सर ने बताया था प्राइवेट प्लेसमेंट है, आप उससे कर सकते हो। द बेस्ट ऑप्शन इज इन दैट गवर्नमेंट एज सच वहां पे इतना कुछ बेनिफिट्स वहां पे प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो मेरे हिसाब से प्राइवेट प्लेसमेंट द बेस्ट वे जहां पे आप आपकी इंक्रीज शेयर कैपिटल कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस डिबेंचर्स इट्स वन काइंड ऑफ इश्यूज रहेगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट पे करना है आफ्टर 1 year or 2 years, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो बेटर देन कि आप प्राइवेट प्लेसमेंट से ही जाओ, वही बेटर रहेगा। दैट दिस इज माय आंसर। सी यशवी जी अगेन मैं ना सेम क्वेश्चन रिपीट करूंगा। आई विल गिव यू, हो सकता है मेरे तरफ से मिसकम्युनिकेशन रही। सी क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आई विल जस्ट टेल यू। क्योंकि सी मेरे पास एक क्लाइंट आता है, इज अ स्टार्टअप कंप्लीट। अब उसका फर्स्ट क्वेश्चन होता है, बॉस I have a company, it's a good company, और for the last few years I am running this company, it's a startup। और कोई बंदा इन्वेस्टर आना चाहता है और वी नीड इन्वेस्टमेंट एंड वो भी इन्वेस्ट करना चाहता है। यस, लेट्स सपोज वी हैव अ कंपनी अराउंड, मुझे 2 करोड़ रुपए की जरूरत है एंड ही इज वेरी इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग। बट यस, मैं उसको शेयर्स तो दूंगा बट उसको कोई राइट वैसे देना नहीं चाहता। आई एम रेडी टू गिव हिम द शेयर्स बट आई डोंट वांट टू गिव हिम द राइट्स। क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं कि हम उसको राइट नहीं देना चाहते, हम शेयर्स तो दे देंगे उसको। अच्छा, उनको राइट्स नहीं देना, शेयर्स भी नहीं देना, राइट्स भी कुछ भी नहीं देना, सिर्फ आप इन्वेस्ट नहीं, शेयर्स देना चाहते हैं, राइट नहीं देंगे, राइट नहीं देना चाहते कि मैनेजिंग कंट्रोल हमारे पास रहे, डायरेक्टर्स के पास रहे, ओनर्स के पास रहे। बट दीस आर द बेसिक क्वेश्चंस। कभी-कभी क्या होता है कि आप एम्प्लॉय को इशॉप देना चाहते हो, राइट? इशॉप भी देना चाहते हो तो इशॉप में भी ठीक है, यू हैव अ डिफरेंट स्कीम्स एंड वैल्यूएशन। आप इसको स्कीम्स पे लेके वैल्यूएशन करते हो उसमें जाके। बट जो स्टार्टिंग वाली होती है, जो स्टार्टिंग की जो जर्नी होती है, जहाँ पे आपके बुक्स में कुछ नहीं होता है, यू ओनली हैव अ आइडिया, राइट? यू ओनली हैव अ आइडिया और 1-2 साल का एक्सपीरियंस होता है जिसको आप मैच्योर करने की प्रोसेस में लगे हो। मतलब यू हैव मतलब वो छोटा बेबी होता है, आपको पता है कि हमें यहाँ से यहाँ जाना है, बट वो आप मतलब उसको आप कोशिश कर रहे हो कि बड़ा करो और उसके बेसिस पे आप ले रहे हो, फंडिंग लेने की कोशिश कर रहे हो, चाहे इधर थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट बोलो या किसी और में बोलो, या कोई पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है तो आप उससे लेते तो हो, लेकिन यू डोंट वांट टू गिव
so many things, है ना, कि नहीं हम उसको राइट नहीं देंगे. तो व्हाट इज योर एडवाइस कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? यार वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, यू हैव टू गिव राइट. अगर हम इक्विटी देंगे तो उसको राइट भी मिलेंगे. yes, then again it would be very difficult for me to give answer at this level, क्योंकि आपको राइट भी नहीं देना है, उसके पास से पैसे भी लेने हैं, then how it will be, again it's a good question for me but I have to think on that. मैं ऐसे तो आपको कुछ भी नहीं प्रोवाइड करूँगी because without up rights कैसे, again it would be very difficult कि without rights आप कैसे उनको करो. लेट्स अंडरस्टैंड इट इन अ डिफरेंट वे, राइट. मैं फिर से क्वेश्चन को ट्विक कर देता हूँ. द क्वेश्चन इज कि अगर हमने उसको मान लीजिए कि लेट्स सपोज वी हैव गिवन देम अ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, राइट. लेट्स सपोज 5% दे दिया हमने फॉर अ सर्टेन वैल्यू ऑफ अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड टू अस. तो एज ए माइनॉरिटी शेयर होल्डर मतलब वो हमारी जो कंट्रोलिंग स्टेक है कंपनी में, हाउ मच दे आर गोइंग टू अफेक्ट दिस कंट्रोलिंग स्टेक? एज सच अगर हम लोग बात करें सर माइनॉरिटी शेयर होल्डर की, तो इतना उनका राइट्स नहीं होता है. बिकॉज आप फॉर एन एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करते हैं, स्पेशल रिजर्व वहां पे 75% है. इफ वी कैन सी मेजॉरिटी स्टेक होल्डर तो किसका होगा, जो मेजरली शेयर होल्डर है कंपनी के में. अभी ये 5% वाले इतना तो उसका राइट होगा नहीं. अगर वो नो भी बोलता है तो दैट डजंट अफेक्ट अवर डिसीजन, तो उसमें तो कुछ इफेक्ट आने ही नहीं वाला है. तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर अगर हम लोग उसको बना देते हैं तो इतना उसका इन्फ्लुएंस नहीं होगा. मेजरली अगर उसके पास स्टेक है मोर देन 10% और यू कैन से मोर देन 25%, एट दैट टाइम दे विल अफेक्ट अवर डिसीजन. माइनॉरिटी शेयर होल्डर में ऐसा कभी भी, क्योंकि आप भी देखते हो ना लिस्टेड कंपनी में अगर हमारे पास 1% शेयर्स होते हैं, बहुत ही रेयर होते हैं, ठीक है, हम लोग कुछ भी कर भी नहीं पाते, क्योंकि मेजॉरिटी स्टेक जो है वो बेसिकली जिसके पास ज्यादा शेयर होल्डर्स है उनके पास ही होगा. कहीं ना कहीं संदीप जी वैल्यूएशन का यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होगा कि हम किस तरह स्टार्टअप की वैल्यूएशन कराएं सो दैट हम मैक्सिमम अमाउंट ले सकें और मिनिमम शेयर होल्डिंग अलॉट कर सकें. यस यस यस. एक चीज हमेशा और माइंड में सबके चलते रहती है, सिंस दीज आर द स्टार्टअप्स वर्ल्ड, तो कई सारी न्यू क्वेरीज भी होती है, हमें भी सोचने में मजबूर करती है. तो वन ऑफ द मोस्ट बेसिक क्वेरी जो कि मैंने हमेशा सुना है सबसे, सी जो प्रमोटर होते हैं दे वांटेड टू सब्सक्राइब शेयर ओनली ऑन अ नॉमिनल वैल्यू, कि बस हमारे को शेयर्स मिल जाए और नॉमिनल वैल्यू मिल जाए. बट एट द सेम टाइम दे आर इशूइंग शेयर्स टू सम अदर पर्सन और थर्ड पार्टी हु इज इन्वेस्टिंग टू एट अ प्रीमियम, हायर वैल्यू, राइट. तो हाउ इज दिस प्रोसेस, मतलब इसको कैसे, मतलब हाउ टू एंड इसके रिगार्डिंग लॉ में क्या एक्चुअली है? सर प्रमोटर के ऊपर डिपेंड है. हम तो उनको बोलते हैं आप वो जो करते नॉमिनल, आप बोलते प्रीमियम प्राइस पे, तो वो हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे बट दे आर नॉट रेडी. वो तो ऐसा ही बोलेंगे ना मेरी कंपनी के शेयर आप प्रीमियम से ही उनको इश्यू करो. करेक्ट. लेकिन आप होता क्या है ना कि लेट सपोज मैंने अपनी ऑथराइज कैपिटल 1 लाख से बढ़ा दी. मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. 1 लाख में मुझे 50% शेयर मुझे चाहिए बीइंग अ प्रमोटर, तो वो तो मुझे नॉमिनल वैल्यू पे चाहिए. 50% शेयर मैं किसी दूसरे को दूंगा, वो प्रीमियम पे दूंगा मैं. इज इट पॉसिबल, कैन वी रिस्ट्रक्चर दिस ट्रांजैक्शन इन सच अ वे? रिस्ट्रक्चर की जहां पे आप दोनों को नॉमिनल वैल्यू में ही दो, या तो दोनों को प्रीमियम में ही दो. नहीं, एक को प्रीमियम में, एक को नॉमिनल में. नॉमिनल वैल्यू में नहीं सर, ऐसे तो कैसे होगा, दोनों को नॉमिनल में ही देना होगा. See, I'm just asking you the practical questions because see, I'm also not the expert, but I have seen so many companies, right? But maybe हो सकता है timing difference हो. There may be some timing difference and all. And I always see कि few companies are issuing shares to their promoter और जो भी owner होते हैं उनको at a very low price, and vis-a-vis कंपैरिजन टू जो वो थर्ड पार्टीज को जो शेयर्स देते हैं, खासकर इन्वेस्टर्स को, इन्वेस्टर आर गेटिंग दोस शेयर्स एट अ प्रीमियम प्राइस, राइट? तो मे बी अ टाइमिंग डिफरेंस एंड ऑल, है ना. बट यसली आई वुड लाइक टू टेक योर हेल्प, राइट? तो मैं एक थोड़ा सा इस स्टार्टअप्स वर्ल्ड में एक हाउ टू अलॉट शेयर्स इन अ स्टार्टअप फील्ड अपार्ट फ्रॉम हाउ टू मेक वैल्यूएशन ऑफ दोस स्टार्टअप फील्ड, है ना. तो स्टार्टअप में हम कैसे अलॉटमेंट करें, वैल्यूएशन कैसे करें, हाउ टू डिफरेंशिएट द कैटेगरी ऑफ शेयर्स, राइट? बेसिकली उसमें कैटेगरी ऑफ शेयर्स में डिफरेंशिएट कैसे करें, एंड व्हाट आर द डिफरेंट केसेस और
type of fundraising, whether it's a convertible debenture or it's a debenture or interest free debenture, है ना. तो एक बार मैं आगे भी प्लान करना चाहूंगा कि we'll have a separate session on this only, because we are focusing on the compliances part of ROC, whether it's company or LLP. और बहुत ही बढ़िया रहा आपने. DDG अब सुमित है हमारे रिप्रेजेंटेटिव. प्रॉब्लम क्या है सर आपका आशीर्वाद हमेशा चाहिए. होना सर हमारे लिए सौभाग्यशाली है सर. आपके दर्शन हो गए, बढ़िया हो गया. नहीं बहुत अच्छा डिस्कशन रहा. एंड आपके भी दर्शन हो गए, आपकी भी बात सुन के कुछ चाहेंगे कि आप भी बोलें. नहीं बहुत अच्छा रहा. मैं सारा सुना है मैंने, और मैं देख रहा हूँ डे बाय डे यश्री का कॉन्फिडेंस और नॉलेज. वंडरफुल यश्री, आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सुमित सर को बोलना चाहिए कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी स्टार्ट किया है. नहीं अच्छा है. ये तो हमारा लीडर्स का काम ही होता है कि जगह जगह से सितारे ढूंढ के लाएं और लोगों के सामने रखें. राइटली सेड बाय यू सर, कि कहीं ना कहीं हमारी कोशिश रहती है कि जो अच्छे हैं, जो प्रतिभावान है, उनको सामने भी आना चाहिए. अब ये डिस्गाइज जो कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसे, भाई कोरोना का काल आया, मुश्किल आया, लेकिन एक ये अपॉर्चुनिटी मिल गई. चैलेंजेस में अपॉर्चुनिटी आई. चैलेंजेस के बीच हमारे पास किस तरह की आई कि हम जगह जगह से जो है हम ये संभव हो पाता है कि हम मिल लें. दिस इज वेरी गुड. बहुत अच्छा रहा. मैं समझता हूँ सभी लोगों के क्वेरीज डिस्पोज ऑफ हो गई और कुछ एडिशनल डिस्कशन भी हो गया. स्टार्टअप का तो एक बड़ा इशू है. जैसे संदीप जो कह रहे हैं कि भाई अपना राइट नहीं, मतलब राइट तो देना चाहते हैं लेकिन उतना नहीं कि वो हमारी कंपनी लेके चला जाए लाइफ टाइम. तो उसका वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड हैं शायद उसमें, वैसे जैसे मैंने सुना है कि आप प्रीमियम पे दे सकते हैं, लेकिन वो भाई जो कानून है उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा. तो इसलिए स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोल पा रहे हैं कि आप ए को तो दे दो 1000 रुपए पे और बी को दे दो 100 रुपए पे. ऐसा नहीं हो सकता. एट ए टाइम पे ये नहीं हो सकता. तो डिफरेंट फैक्टर्स आपको बनाने पड़ेंगे, डिफरेंट टाइम पे करना पड़ेगा, वो चीज अलग है. बहुत अच्छा रहा सर. मैं तो भाई यश्री को तो बधाई दूंगा ही, लेकिन सुमित को भी दूंगा कि उन्होंने एक हीरा ढूंढ के ला के दिया हमको. तो बहुत अच्छा रहा. और मैं समझता हूँ टाइम के हम करीब हैं. और कोई क्वेरी है किसी की तो देख लो. क्वेश्चन आंसर में 8 क्वेश्चन नजर आ रहे हैं मेरे को. आई थिंक सारे क्वेश्चन कवर्ड हो गए. Sir, we have resolved all the questions. Is there any exception regarding any compliance to a deemed public company as compared to public company? ये तो public company पे ही अप्लाई होंगे उस पे तो आई थिंक ना. तो deemed हो गई है तो public limited ही होगी ना वो तो. Yes sir. चलिए, थैंक यू भाई. और तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता. थैंक्स ही कर सकते हैं. पास होते तो हम आपको फूलों का गुलदस्ता देते हैं. चलिए, थैंक यू वेरी मच. संदीप, आप बस फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स करें और कल के लिए इनवाइट करें. कल हमारा इनकम टैक्स पर है डॉक्टर राकेश गुप्ता एंड सोमिल अग्रवाल. थैंक यू सो मच सर. थैंक्स अ लॉट. और यश्री जी ने बहुत ही अच्छे से इट्स बीन अ वंडरफुल सेशन. और आई बिलीव कि मैंने लास्ट में शायद नेक्स्ट सेशन के लिए भी हमने कुछ प्लानिंग कर ली, स्टार्टअप डिस्कस करके. आई थिंक विल प्लान अकॉर्डिंगली. तो बहुत ही बढ़िया रहा. इट वाज वंडरफुल, इंफॉर्मेटिव, वेरी नॉलेजेबल. थैंक यू सो मच यश्री जी. आप आए, आपने पार्टिसिपेट किया और हमारी नॉलेज बढ़ाई. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सुमित गर्ग जी, आर NRC मेंबर, नेताजी हमारे. तो सर आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद. आप प्लीज आया कीजिए सर, आपका प्लेटफॉर्म है. आपको कभी भी लगे ज्वाइन करना है, ये प्लीज आस्क कि बॉस हमें भी ज्वाइन करना है. डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम एट एनी टाइम. राइट. एंड बहुत अच्छी बात रही. ऐसा फ्रेंड्स वी जस्ट जैसे डीडी जी बता रहे थे, यश्री जी को इन्होंने ही हमें इंट्रोड्यूस कराया था. एंड वी गॉट अ वेरी गुड टैलेंट. राइट. और सुमित जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. आप आए, है ना. आपकी पार्टिसिपेशन वेबिनार में रही और हम आशा करेंगे कि इन फ्यूचर भी रहे आपकी पार्टिसिपेशन हमारे साथ.
श्योर सर, श्योर। हमारा घर है सर, हमारा ग्रुप। ये तो हमारे मेंबर है, परमानेंट मेंबर है एसटीडी सर्कल के परमानेंट मेंबर है भाई हमारे। सर। फिजिकल होता था तो प्रेजेंस दिखती भी थी कि हम सभी लोग आए हैं। अब तो वर्चुअल रिकॉर्ड में हो कहीं गई। ना कहीं, हाँ अब तो रिकॉर्ड हो गई भाई। जी। अब रिकॉर्ड हो गई। राइट सर, राइटली पॉइंटेड। और डीडी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी सर का आशीर्वाद मिलता रहे, तो हमेशा मिलता रहता हो। और प्रोग्राम की शुरुआत कंक्लूड करना आपके हाथों होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। लगता है कुछ एक चलो काम हो गया हमारा, अच्छा काम हुआ। तो थैंक यू सो मच सर। और आप सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, इस वीक में हमारी फ्राइडे तक रेगुलर वेबिनार है 4 to 6। टुमारो वी हैव वेबिनार ऑन इनकम टैक्स। सोमिल जी आएंगे, राकेश गुप्ता जी आएंगे, इनकम टैक्स पे है। Then after we have webinars on GST। GST पे एक सेपरेट वेबिनार है जो भी अपडेट्स हुई है, नई जो चीजें आई है उस पे वेबिनार है। और हम एक जीएसटी पे सेपरेट वेबिनार भी कर रहे हैं, जीएसटी ऑडिट पे फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 भी जा रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स काफी और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमारी जो इंसॉल्वेंसी है, इंसॉल्वेंसी लॉ में भी काफी चेंजेस आए और बहुत अच्छे अच्छे केसेस हुए हैं। इवन आप लोग आए दिन न्यूज़पेपर, बिजनेस न्यूज वगैरह में पढ़ते होंगे, सुनते भी होंगे कि और नॉट ओनली लॉ, ऐसे ऐसे केस स्टडीज आए कि मतलब अगर आप 2-4 सुनो तो यू विल फील गुड एंड काफी मतलब आपके नॉलेज को इनहेंस ही करेगी। फॉर दैट वी हैव मदान साहब, मदान लॉ हाउस से। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज कंटिन्यू रहें, ज्वाइन करें हमें और अपनी नॉलेज को जितना इनहेंस कर सके, अपने आप को और ज्यादा इम्प्रूव कर सके, अपनी वर्किंग इम्प्रूव कर सके। इन्हीं सब कामनाओं के साथ आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। संदीप जी का स्पेशल धन्यवाद, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सभी को, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।